Good morning everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Uh, let me Good share. morning, sir. So guys, the market is up again 1,000 points now. Technical analysis are saying that market the bottom has been made. ऐसा कुछ नहीं होता है. You never know what happens in the future. Now all you will see bottom has been made. Now it will again restart its journey towards again an all-time high. So now from a analyst perspective, अगर तुम आज equity research में जाना चाहते हो तो you should know what is happening in the Nifty. Okay. So let me share my screen. आज एक वापस न्यूज आया है about Maruti, which says that Maruti is lines up for a new 10,000 crore Gujarat plan. Probably they are estimating a demand to increase in the future. अच्छा, now whenever Nifty recovers, you have to talk about which sectors will perform. So now we will focus only on B2C और companies that we understand. B2B भी होता है उसमें. तो वो क्या है सेक्टर लेवल पे we can talk about, let's say renewable energy की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, because obviously there is a shortage of power. मैंने काफी have also seen this what do you say रील्स जहाँ पे है ना पेट्रोल पंप के बाहर लाइन हो रही है, एलपीजी के शॉर्टेजेस है अभी तक. But somehow, even Modi addressed yesterday that PM Modi addressed yesterday that there will be a problem, but we need to stick together and face this problem together. ऐसा उन्होंने बोला. तो probably there might be a problem coming in the future, maybe एक दो महीने में. So friendly advice, keep your supplies ready. घर पे अगर सामान वामान नहीं है तो भर के रखना. गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो भर के रखना. So now in this case, what I found is what will benefit. गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो which cars will benefit? EV. EVs. ईवीज हाँ. अभी ईवीज में गाड़ियां तो कम है, वैसे गाड़ी में तो कोई लिस्टेड प्लेयर है नहीं, बट हाँ टू व्हीलर्स में तो है. टू व्हीलर्स में एक बार तुम गाड़ी घर पे रख के जा सकते हो. मतलब लेट्स से इफ यू हैव अ टू व्हीलर, यू कैन स्टिल गो टू द ऑफिस और टू योर रेगुलर वर्क. तो ईवी टू व्हीलर्स में आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रप्शन, एथर और मे बी टीवीएस वाइल विल हैव अ गुड रन, मतलब उनके प्रोडक्ट्स के लिए. अभी टीवीएस के पास तो बाकी भी प्रोडक्ट्स है, एथर के पास सिर्फ ईवीज है. Now, this is one of the things that can help you understand the markets more, I would say, sorry, stock more closely. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि you should, आग बंद करके स्टॉक बाय करने चाहिए. दिस इज द इन्वेस्टमेंट थीसिस, ऐसा नहीं होता है. बट ओवरऑल व्हाट आई फील इज दिस थिंग्स आर एथर लुक्स सब है ना, एवरीथिंग लुक्स इन फेवर ऑफ एथर. कि डिस्ट्रप्शन हुआ है तो अभी अगर ऐसा कुछ होता है पेट्रोल्स में, आई कैन ऑल्सो सी आई एम नियर अ पेट्रोल पंप नाउ, ह्यूज लाइन नियर अ पेट्रोल पंप. सो probably things can get worse. Maybe few थोड़े महीने के लिए ही होगा. But in that, if sales increase for these companies, better. Now they are also saying that country looks to see now when a country's largest car maker who has 50% market share is saying that they will expand more. Probably demand तो है market में. हाँ, somehow it should not affect with the interest rates and all. वो inflation बढ़ता है, consumption कम होता है इंडिया का. Those all things can. Okay. अच्छा, those who want to speak, you can you raise your hands, or else increase my mic volume. Oh, sorry, my voice is not audible. So you're audible. Okay, Sir, audible, but कम आ रहा है थोड़ा आज. कम आ रहा है क्या? Okay ना. What is the reason? Uh, what about now? Same? Is it the same? No. So it's still a bit low. Yeah. 1 second, let me check. Okay, how about now? Change the mic. Still low.
So it's little better now. Okay. Yeah, Harsh, can you? I think yesterday I missed your messages. Always raise your hand. मुझे पता नहीं था कल है तुमने. Then I realized that you were also about to speak. No, Okay. sir. Actually, I did not say it on purpose because the news was largely the same for everyone, and I did not just want to repeat the same things everyone had said earlier. Okay. I did not have anything else to add because there wasn't much news other than two or three articles yesterday. Okay. Go ahead. Can go ahead So, with your today's news. Yeah. sir, just I had a question. When Yeah. times like these come, when there are only two or three articles, and now Mm-hmm. suppose we are talking to an investor in a room with other analysts all in the same room. So, is Mm-hmm. it better to say the same news again or just focus on something else? No, it means that you can add something on it. If you have anything to add on, or else usually what happens in a sell side, usually sectors are assigned. So you should only talk about auto, or maybe I will only talk about pharma. So their sectors are assigned usually. So if these three sectors are there, then you speak, or else you something speak about an investment idea. How it goes. As of now, it's fine. In our classes, it's fine, but in practically, your sectors are allotted. That's all. Okay. 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 Yeah. Okay. So shall I proceed now? Yeah. Go ahead. So my first update for the day is India's aging truck fleet and hello. Yeah. Yeah. Go ahead. I'm listening. Okay. India's aging truck fleet and the structural replacement opportunity that it poses. Out of 4.5 million vehicles registered post 2003, 1.9 million vehicles, that is 40%, are already older than their life cycle, which is estimated at 12 years. The average fleet age has climbed up to 9.5 years and the highest level on record, highlighting a structural aging base. Ashok Leyland and Tata Motors are obviously the direct beneficiaries because they command an 85% market share. That is medium and high commercial vehicle segments brings Ashok Leyland's 28,000 crores of revenue and 75,000 crores for Tata Motors yearly. Okay. So, what is your take on it? Why should commercial vehicle increase in India? So, why should commercial vehicles increase in India? हम्म नहीं मतलब why should I buy the stock ना तुमने न्यूज़ बोला है एजिंग है तो अभी ना मेरे जो Okay, दिमाग में so घूमता sir, Ashok, like we talk about EVs in each segment, this segment will not pose any threat, the commercial vehicles category, for at least another life cycle, that is for 12 years, because of the lack in charging infrastructure and the range anxiety also. These vehicles generally go off to far-flung areas, engage in rough terrain, which is not possible for EVs at this moment in time. And I also researched a bit there aren't many companies that are engaged in commercial vehicles that can, carry huge truckload capacity, like Ashok Leyland and Tata Motors does. So there are only one or two vehicles, and that too do not offer very high ranges, about 150 kilometers. And these vehicles run for 12 hours daily, covering about 300 to 400 kilometers. नहीं बट यहाँ पे ईवी की किधर बात है इज अबाउट आर यू टॉकिंग No, अबाउट द sir. ईवी So what I'm saying is Ashok Leyland is not engaged in EVs for that purpose only because it is focused on commercial vehicles. And just like EV market is so easy to penetrate right now, this segment will not hurt Ashok Leyland or Tata Motors revenue at all because they are the obvious beneficiaries. नहीं बट पता नहीं और योर न्यूज़ वाज So your इंडिया voice is एजिंग jarring a little. no I is it audible now Yes, sir, perfect. I was saying that your news was about the aging truck right aging truck fleet Yes, sir. so in that EV कहाँ पे आ गया No, sir, that's exactly what I'm saying. That this sector will pose no threat as other sectors do, like two wheelers or passenger vehicle segment, where EV penetration is an increasing issue for industry leaders that are in I segment. This segment will not pose any issue, so this will benefit Ashok Leyland and Tata Motors. see now Harsh from this news what I understand is aging truck fleet structural replacement opportunity
first of all, this S- shouldn't be a hit. Okay? So I will pissed there is off an that you issue saying again, like I think. one second. Is it audible now? Yes, sir. Audible now? Okay. No, I was saying that when you are saying that the aging population or the aging truck, first of all, when you say such kind of news, your heading is not good. India's aging population. See, I will only read your heading. India's aging truck fleet, a structural replacement opportunity. How does that help me understand anything? Sir, it will impact the companies that, supply directly commercial vehicles to the companies. And Yeah, Ashok Leyland. I have given you that tips now. Whenever you write a heading, it should be data points in the heading. बिना data points के तुम अगर बात करते heading से ही तो I obviously am not reading your news after that. Okay. So So you have could to make an understanding out of it. That first line is so important. कि तुम, if I am not reading your first line, if you are not exciting, probably I am not reading your entire newsletter. so could you elaborate? I mean, what would So, have been the right heading for this? so always heading should have a data points. So India's aging truck fleet to lead to a we said 24,000 crores out of 4.5 million vehicle registered, 1.9 million, 40% are older than the life cycle. So what do you analyze from this? That was I was asking. ये जब तुमने न्यूज़ पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में पहले क्या आया from an investment perspective? So that the companies that directly benefit would be Ashok Leyland, and since it is a cyclical segment, and the segment is poised to grow at 6 to 8% for the years from now on. So Ashok Leyland will So benefit directly. Tata Motors and Ashok Leyland to benefit from a structural change in replacement opportunity Yes. of which is which number of 12 years, which has an older life cycle of 12 years. So either the stock name, either the data points should be there in your investment thesis. Everything should be from a company point of view. बिना कंपनी के अगर तुम कुछ भी बता रहे हो सर ऐसा होगा वैसा होगा, कंक्लूजन क्या है? ये न्यूज़ Okay, so बताई you're क्यों रहे हो? okay, so you're saying that I should have included the profit Ashok Leyland or Tata Motors would have incurred from this in the data point. Yes, yes. Okay. Oh, okay, so I'll keep that in mind. Tata Motors and Ashok Leyland to benefit for a 27,000 crore revenue uh, to to have a replacement demand. ऐसा कुछ. Oh, I've not read your entire news क्योंकि तुम्हारी न्यूज़ में पढ़ना क्या ये नहीं मुझे पता है. See, understand, I have to read 15, 20 news everyone have sent. तो मैं तुम्हारा पूरा न्यूज़ पढ़ने वाला हूँ नहीं. I'm just gonna go through it. तुम अगर सब जम्बल्ड अप करके लिखोगे तो have paragraphs while writing and heading should be attractive. हमारे हेडिंग में अगर so डेटा पॉइंट नहीं है, कोई कंपनी का नाम नहीं है, तो मैं नहीं रीड कर पाता. ऐसा है. so I think there is an interference again on your side. One second. Is it audible now? So the voice is still a bit low. Okay. Yeah.
How about now? Yes, sir. Perfect. So I was saying that whenever you write everything, either investment, your entire newsletter should form a and have paragraphs to write. Don't jump up. Don't write the news in one paragraph. All the points in one paragraph. Have spaces. Spaces दिखना चाहिए उसमें. मुझे पता तुमको मुझे देखना है कि सर आप ये पढ़ो ये लाइन पढ़ो. You have to make my work less. Okay, sir. Okay. Understood. So, sir, should I give out the second news or? Fine. Go ahead. Okay. So Euler Motors raises fresh capital to scale its EV push. It has raised $47 million and an additional 250 crores in debt financing. It is promoted by Hero MotoCorp at a 30 to 36% stake. Core products are EV three-wheeler and light trucks. Target is hyperlocal delivery, e-commerce, and it plans to double its capacity from current 1,000 EVs per month to double of that 2,000. Product catalog is majorly four vehicles, capacity from 750 kilos to 1.5 tons. The range is around 150 to 200 kilometers, and it does provide fast charging on each of its vehicles. The direct competitions would be TVS, King, and Bajaj also in the three-wheeler segment. And this sector is actually not much looked at, but it is very important, the three-wheeler segment, because warehousing and e-commerce has pushed vehicles demand like these from at a very good level. These are used in e-commerce and hyperlocal deliveries also, and porter regular deliveries also. Okay. So Harsh, again, this company is not listed, correct? Euler Motors is not listed. वो No, raise कर sir. रहा है. Yes, sir. Euler is Promoted not by listed. promoted by Hero MotoCorp having 36% stake. Fine. थ्री व्हीलर मार्केट कितना बड़ा है, कितने प्लेयर्स है इसमें, कितने प्रोडक्ट बिकते हैं साल के? Sir, I could not find the exact three-wheeler data because this three-wheeler is actually different from the one that is used to ferry passengers. So this exact three-wheeler data was not available. But I found out the warehousing space, which is at 550 million square feet, and it is poised to grow at 16.5% CAGR for the years to come, and it will likely double in by 2030. It will go up to 830 or 850 million square feet by 28-29. तो ये कंपनी में इम्पैक्ट कौन होने वाला है? Who's gonna impact it? So, okay, the direct beneficiaries, as we all know, would be Hero, but the companies that would be, hurting a little would be TVS and Bajaj because they also supply such. And Ashok Leyland also does, but its vehicles are just a bit larger than this. These vehicles are generally used for, ferrying goods in and out of the city limits mostly. And that's why the range anxiety is not there because it charges within an hour or two. तो हर्ष, वो जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप मैंने बोला है ना करने को, उसमें टीवीएस के थ्री व्हीलर्स का डेटा आता है, अशोक लेलैंड के सीवी का डेटा आता है, टाटा मोटर्स की सीवी का डेटा आता है. Why all those data are not in this? Sir, I can't hear you again. Hello? Hello, hello, hello. So your voice has gotten a bit lower. They're audible now? Hello, Hello? hello, hello. Yes, yes, sir. Yes, yes. It's just a bit low, but yeah, I can hear you. So I was saying that why there is in the automobile workshop that I've told you to do, TVS three-wheeler numbers are there, Ashok Leyland numbers are there, Tata Motors के numbers होते हैं, Mahindra के three-wheelers के numbers होते हैं. Yes, sir. I know that actual three-wheelers numbers are there, but the segment that autos are not distinguished from this. I could not verify that what So are the then what vehicles. are these products? ये क्या product है? कितने का आता है इसका product ईजो का? उसका कौन competitor है? Sir, direct pricing was not available on its website. I तो scoured through, but approximate होगा ना?
Yes, sir. I went through other companies' listings, but they were also on third-party websites, on auto agency websites. It ये is जो कंपनी है ड्यूल मोटर्स का प्राइसिंग तो होगा ना उनके वेबसाइट पे, क्या नहीं बिकता था है कितने का बिकता नहीं था सर, एक्चुअली आई है। तो फिर आई तुमको डिड अगर कंपनी के बारे में पता ही नहीं तो तुम मुझे न्यूज़ बता ही क्यों रहे हो सुबह सुबह, कुछ भी नहीं पता है तो। So, but after looking at a competitor's price range, I can gauge that it must be in this range. And when you are actually faring goods daily basis on a 100 kilometers range only, um, having an EV is actually much more beneficial. Bajaj has its CNG version. अगेन अगेन आई एम जस्ट आस्किंग यू हर्ष, मुझे उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ किसका कॉम्पिटिटर है। ईवी फेयर कर रही, आई डोंट केयर अबाउट दैट। इफ आई एम एन इन्वेस्टर मुझे बताओ हाउ इट इज इम्पैक्टिंग माई डिसीजन टुडे। डेटा पॉइंट्स में बात करो, अपार्ट फ्रॉम डेटा पॉइंट्स योर, अगर तुम जो भी बात करते हो अबाउट, तुम नाउ फ्रॉम 2-3 डेज आई एम ऑब्जर्विंग कि तुम सिर्फ मुझे यही बता रहे हो, थियरी बता रहे हो। थियरी का करूँ Yeah. क्या मैं? फेयर होने वाला है, ये होने वाला है, नंबर्स बताओ ना। आई जस्ट आस्क यू वन नंबर, कितना थ्री व्हीलर बिकते हैं इंडिया में, किसको इम्पैक्ट Oh, होने वाला है? महिंद्रा भी s- बिकती है थ्री व्हीलर। Now, what it shows that I'm not saying you. What it shows that you are underprepared to talk anything in the interview. So ये न्यूज़ पे बात okay. नहीं कर सकते इंटरव्यू। So, sir, so I should avoid news that cannot give me hard data points. नहीं, इसका तो होना चाहिए डेटा पॉइंट, इट इज अ गुड न्यूज़ रादर। तो अच्छा ही नहीं नहीं है कि सर, थ्री व्हीलर विल गेट इम्पैक्टेड, बट कौन no. से थ्री व्हीलर का मार्केट है? Yes, sir, but like Euler का data point नहीं था, so I can proceed with the competitors' data points. हाँ ठीक, Okay. अगर ठीक हर्ष, तुम मुझे बता रहे हो तुम्हारी कंपनी कितना रेस कर रही है, 47 मिलियन रेस कर रही है। Yes, sir. सर मुझे पता नहीं मेरी कंपनी करती क्या है। ऐसा कैसा होगा यूलर मोटर्स के बारे में कुछ भी देखा नहीं होगा? इट इज नॉट पॉसिबल हर्ष, कुछ भी डेटा पॉइंट है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होगा क्या? तुम दोगे किसी को $47 मिलियन बिना डेटा बिना कंपनी का प्रोडक्ट जाने? Okay, sir. तो इट इज, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल कि तुमको इसका डेटा नहीं मिल रहा है। So it was not on the website, so I couldn't get, and since it's a private company, it was not possible for me to get data. But yeah, I will from now on look at other क्या 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 competitors' price. इट इज नॉट डेटा, इट इज अ कंपनी करता क्या है वही है, बाकी डेटा तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ क्या कितना बेचता है क्या करता है। रिसर्च इंटरव्यूज आर वेरी डिफिकल्ट, ऐसे नहीं होगा सिर्फ न्यूज पढ़ के डालने। दैट इज व्हाई Okay, आई sir. से वो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तुम अगर वो नहीं देखते, तुम अगर तुम्हारे पास अगर डेटा पॉइंट्स नहीं है तो इंटरव्यू में तो इट विल बी स्क्रूड अप। फिर तुम्हारा एजुकेशन तो बाहर में गया, मतलब वो तो नो वन विल कंसिडर योर एजुकेशन अगर तुम ऐसे परफॉर्म करते हो तो। कि वी हैव आई हैव 2-3 सीएस का है इंटरव्यूज लाइंड अप। मुझे रिव्यू आया कि दे आर ओके ओके टाइप्स। उनको बोलते हैं तुम एक्सपेक्ट करते कि तुमको 12-15 लाख मिले, तो भूल जाओ कि ऐसा ऐसा है तुम्हारे पास। Okay, so I'll work on that. या शिवराज, एनीथिंग ऑन द इंडियन ऑटोज? शिवराज, So just give me a 1 minute. I will present that someone. Meanwhile, someone will present. राज, राज, कार्तिक। Yes, sir. Good morning, sir. My news about today about the Swiggy, which hikes its platform fees. So Swiggy increases its platform fees by 2.59 rupees to 17.58, which is 17% increase. It's in line with the Zomato's increase of its platform fees 3 days earlier. Uh, After GST,
uh, it's in line with the both are in the same direction. If we talk about the quick commerce companies are facing a slower growth, but improving unit economics and profitability should uh, give them support. In as as far as order value, gross order value is concerned. So for financial year 25, data is here. So which is 64,000 crore for the whole country, which is expected to triple by financial year 28. From which Swiggy is gross order value is 16,683 crore in Q2 financial year 26, which is up by 48% year on year, in which food delivery is 8,086 crores. Whereas Zomato Eternal, which is its rival, is their gross order value is 19,199 crores, in which Blanket GOV is 9,400 and food delivery is 9,700. Besides this, it has a for segment of Hyperloop, which is uh, basically restaurant charging. Which is excellent. Sorry, I didn't get you. Correct. Yeah, sir, should I repeat the same? Yeah, yeah, last one. What was the last Uh, sir, at last, Zomato's GOV is 9,421 and food delivery is 9,700 crores. Apart from this, Eternal also is in Hyperloop, which is concerned with the commissions outdoor dining, basically. one? I think why the last news was on 18th March. आज क्या? 25 March. Saturday को तुमने क्लिक किया था. You don't come in the class. You don't participate. And now you are not able to print. तुमने इतना सा present किया, लिखा तो कुछ नहीं है उसमें. Uh, या सर वो बिकॉज वो बाकी जो मैंने प्रेजेंट प्रेजेंट किया वो सब मैंने अलग से रिसर्च किया, वो सब न्यूज़ में नहीं था वो तो और बताना वो चाहिए. इंडस्ट्री रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने Why लिखा would नहीं I, उसको. why would I give you a chance to speak for 2 से? तुमने क्या बोला कि स्विगी का प्राइस इंक्रीज हो गया है 17 रुपीज से बाई 2.59 रुपीज विच इज अप 17%. बस. ठीक है. अभी ओके. और सो शुड आई मेंशन एवरीथिंग जो मुझे बोलना है? यस, ये कौन से पेपर में लिखना है वो भी लिखना है. अच्छा, सोर्स ठीक है. ठीक है सर, अगली बार से मतलब ध्यान रखूंगा. हाँ किरण, आफ्टर सो मेनी डेज. Yes, sir. सर वो इतना लिखने वाला मिला नहीं करके, जो न्यूज़ आया उन पे इतना लिख नहीं पाया. सी कार्तिक, 5 न्यूज़पेपर्स है. 5 न्यूज़पेपर तुमको एक न्यूज़ भी नहीं मिलता है, इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे. ये नहीं लिटरली सर, न्यूज़ मिला लेकिन वो मतलब उन न्यूज़ पे एक दो न्यूज़ मिलता है लेकिन उस पे वो उतना लिख नहीं पाया करके. ऐसा नहीं होता ना. आई ट्राई मोर. This is not how you answer as an analyst ना. अगर मैं I expect you if I refer you for 10-15 lakh role, तो ये थोड़ी आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे कि सर मुझे पता नहीं. तो गलत है ना, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो. इतने सारे न्यूज है आज पेपर में, कल भी थे. कल तो तुम थे नहीं क्लास में, कल तुम आए नहीं, एब्सेंट. कल के न्यूज किधर है? इतने सारे न्यूज थे कल पेपर में. सर कल किसी वजह से जाना पड़ा था कहीं. उसके पहले परसों का क्या? ठीक है, फाइन. टू यू
क्या अभी दर्पण? से रेगुलर करेगा सर या क्या हुआ? सर अभी रेगुलर करेगा। क्या दर्पण? Yes, sir. Sir, am I audible? यस यू ऑडिबल। Uh, sir, I am presenting news from Mint. The heading is, I mean, the electric commercial vehicle firms 530 million, that is in 6 months, which is around 404,000 crore rupees in electric vehicle, particularly in commercial vehicles. So, the market size, total market size is 9 lakh crore according to FY25. And EV penetration is currently 2 to 3% of our commercial vehicles, and that is going to increase by 5 to 6 times in 12 to 18% is expected to by FY30, and the volume would be increased from 20 to 25,000 to 1.5 to 2 lakhs. So the implied CAGR of electric vehicles, commercial vehicles, is 30 to 35% in between of FY25 to FY30. So the investment, such a large investment would directly impact Tata Motors, as the EV bus market of Tata Motors is 70% plus, and the commercial vehicle contribution is 30 to 35% in Indian of an India revenue. So the sales would be FY25 of EV commercial vehicle is of Tata Motors is 15 to 18,000 units, and it is expected to grow CAGR at 25 to 30% with the direct investment in commercial vehicles or in EV sector. So it is a Tata Motors would be directly beneficiary of this fleet electrification in commercial vehicle, as core portfolio is will be impacted in Tata Motors. Talking about Ashok Leyland, EV contribution is less than 5%, so it won't be that much impacted in the EV share for the commercial vehicle base. And another main company is Electra Green Tech, which has 100% EV exposure to the commercial vehicle base, and the order book is 8,000 plus buses. So with this revenue of with CAGR is 35 to 40% would be expected to grow on FY25 to FY30. So it is a pure play EV for Electra Green Tech in its EV commercial vehicle sector. So uh, just a second. And yes, one of the company of Hero is also, backed by Hero. Euler Motors became the latest to join this wave on Tuesday, as it secured the 47 million of funding. So yeah, though Hero is not having commercial vehicle base, but this company has secured the funding. So in EV fleet funding, the PMI Mobility KKR also bet on this 300 million leads to surge in green cell manufacturing. The government's truck and bus electrification also pushes and tighter the norms of PM e-drive scheme, boosting this commercial vehicle electrification adoption. So electric vehicle CV sales rose 54% in 2025, though the penetration remains low at 1.5%, but it has a much growth for this EV, specifically in commercial vehicles, by the push from government. That's all from my side. And sorry, sir, you are not audible. ओ सॉरी 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 दर्पण, या दर्पण, आई वाज सेइंग दैट तुमने ये सब लिखा है तो किधर है वो तुमने बोला ये सब तुमने भेजा था नहीं मुझे? सर भेजा हुआ है आपको। वर्ड फाइल में नहीं, वर्ड फाइल में नहीं, आई हैव टोल्ड यू टू सेंड इट इन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मैसेज की तरह सेंड करना होता है। सर तुमने जो व्हाट्सएप में। वर्ड हाँ तुमने जो वर्ड में लिखा है वो प्रेजेंटेशन पूरा गलत है। वो वर्ड तुम्हारा कोई सुन पड़ेगा नहीं, कि उसमें कुछ प्रेस देखने जैसा है नहीं।
तुमने सिर्फ तुम्हारे हिसाब से पॉइंटर्स डाले उसमें। मतलब सी ये जो अंडरस्टैंड। फंडिंग है ना सर, उसके हिसाब से कौन सी कंपनी का कितना इम्पैक्ट होगा सर, वो ही लिखा है। नहीं तो वो क्यों लिखा है, इतना सब तुमने मेहनत की है क्यों? कैन यू प्रेजेंट दिस इन द इंटरव्यू? कुछ नहीं है इसका, देयर इज नो फॉर्मेट टू इट। कौन सा रिपोर्ट है? तीन ही रिपोर्ट होते हैं, कंपनी रिपोर्ट होता है, इनिशिएटिंग रिपोर्ट होता है, और तुम्हारा क्वार्टरली रिपोर्ट होता है। कहाँ पे बैठता है तुम्हारा ये? सर आई तो फिर जस्ट बराबर। ऐड, मतलब सर वो जो मिंट की न्यूज थी ना सर, जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था ईवी सीवी में, तो बेस्ड ऑन दैट विच कंपनी वुड बी इफेक्टेड एंड हाउ मच, सो सर आई जस्ट एडेड दोस थिंग्स। नहीं, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, व्हेन यू डू समथिंग, अभी तुमने इतना मेहनत करके बनाया, अप्रिशिएटेड, बट इसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना। इट इज लाइक तुम्हारा एमबीए का प्रोजेक्ट भी है, तुमने बस मेरे को न्यूज था वो तुमने फॉर्मेट करके दे दिया। तो मैं क्यों बोलता हूँ व्हाट्सएप पे लिखने को, बिकॉज दिस इज एन हैबिट विच इज बीन इन द इंडस्ट्री, कि हम इतने साल हम ऐसे ही करने के व्हाट्सएप पे या मेल पे लिखने के, क्योंकि अगर ओके, तुम सो आई क्लाइंट को शुड भेजते हो। टेक्स्ट यू ऑन व्हाट्सएप। यस, यू शुड टेक्स्ट मी, और जो भी तुमने बोला है इट शुड बी टेक्स्टेड, बिकॉज आई, जो सामने वाला होता है उसको तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं होता यस सर। है। तो तुमको उतने क्रक्स में ही बताना है तुमने, और फिर टाइम मिला तो प्रेजेंट करो तुम। तो तुमने लिखा है, तुम्हारे पास रखो। हम्म। ठीक है, तुमने जो किया अच्छा है, इट इज नॉट वर्थ सेंडिंग टू एनीवन। ये तुमने ओके। तुम्हारे रिसर्च किया, टोटली फाइन। हेलो। हेलो हेलो। मैं हाँ बोल रहा सर, हूँ, ये हाँ सर। तुमने जो किया हाँ। तुम्हारे लिए किया, इट इज टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन। ओके सर। ओके सर, आई विल टेक्स्ट यू ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम नाउ। हेलो। सर यू आर नॉट ऑडिबल आई गेस। ऐसा है। हेलो। हेलो हेलो। Sir, you what did you speak last time? I mean, we was not audible. मैंने बोला ये सब एमबीए के लिए होता है, प्रेजेंटेशन पीपीटी। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई Okay, पीपीटी पे बात नहीं करता। ऐसा है। वर्ड फाइल okay, तो okay, बिल्कुल sir. नहीं I हम। will. ठीक। या हाँ. बिकॉज व्हाट Okay, हैपन I ना, will. आई हैव टू ओपन योर फाइल। हाँ, मेरे हाँ. को वर्ड फाइल तुम्हारा ओपन करना है मेरे फोन में, मुझे पहले डाउनलोड करना है, फिर ओपन करना है, फिर देखना है, कोई नहीं करेगा ये। हम्म. समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये है। Okay, sir. I will text you the key data points. टेक्स्ट ही करना है, यस टेक्स्ट ही करना है। इज नेवर Okay, sir. अबाउट Thank you, sir. वर्ड फाइल। या Yeah, sir. ओके। या महन, महन, ऐसे शिवराज, सॉरी Yes, शिवराज sir. वांटेड Good टू गो। morning. नहीं सॉरी, शिवराज वांटेड टू गो, महन one second. Okay, sir. Sir, okay, sir. So my news is regarding my news is about hotel sector. So as we have been seeing, the hotel sector took a hit in the March because of the ongoing West Asia conflicts. So what is happening right now, luxury hotels are taking the most hit. Why? Because 30 to 50% of their guests come from abroad, and with West Asia flight disruptions, foreign tourist arrivals are falling. On top of that, these hotels earn a significant chunk of revenue from F&B and MICE segment, and April and May bookings are already seeing cancellations. So near term luxury players will feel the pressure. And now talking about the ARR trend in this quarter, ending in March. So January was the weakest month in 14 months, where ARR grew just 3 to 5% year on year to nearly 4,000, nearly 9,500, because of post-wedding season and festival demand had faded. So that's why occupancy held steady at 66 to 68%, and overall it leads to revenue per growth to 4 to 6% year on year. So yeah, and in February it bounced back. So large conferences and summits in Delhi, including the India AI Summit, drove event-led demand and pushing rates higher temporarily. Then again came March. Then there is again sharp drop. So that's why there is a estimation of 15 to 20% month-on-month ARR decline because of this ongoing West Asia war. And कितना डिक्लाइन है, कितना डिक्लाइन? सॉरी सॉरी, आई मिस्ड योर yeah, डेटा पॉइंट्स। it is हाउ मच इज द estimated, डिक्लाइन? sir, to month on month ARR decline of 15 to 20%. 15 20%, अच्छा।
हाँ. Okay. Okay. I think they are talking about month on month because and also these figures it seems quite large because in February that summits and conferences took that ARR to higher end. So that may be the reason, sir. And in addition to that, the ongoing situations of flight disruptions and all. Okay. Okay. Uh, Yeah. Go ahead. so overall, if we can see that the long term story is still intact because first domestic occupancy is holding at 66 to 68%, as I said earlier. So that is the foundation of the sector's earnings. So and the second is the structural supply demand gap is widening outside metro cities. So 65 to 70% of future hotel supply is coming up outside the top 10 cities. So tier 2 and tier 3 leisure destinations like Udaipur, Jodhpur, Srinagar are seeing flight booking surge to 40 to 70% year on year, as we have discussed this in yesterday's news. So that's why the organized hotel sector is undersupplied in these tier 2 and tier 3 markets. So here IHCL and Lemon Tree are already signing aggressively to capture this gap in these locations. So bottom line of my newsletter is like it is expected to see 15 to 20% growth in operating profit from financial year 25 to 28, which is driven by new asset additions and higher single digit ARR growth of 6 to 8% by taking the assumption into consideration that the geopolitical disruption is temporary. So now coming to the listed players, IHCL remains the broadest play, widest geographic presence because they have balanced portfolio from mid-scale ginger brand to Taj brand. So and they have also limited direct Asia exposure because only 3% consolidated revenue share from Dubai property they have reported. So coming to Sammy Hotels would be the value pick if we are looking beyond the financial year 26. It will be benefiting from tier 2 supply gap. And talking about EIH and Leela, they are more exposed to luxury segment foreign guest mix. That's why in near term they might be affected largely. Sir. So ये कौन that's से न्यूज़ all में था? about from my side. कौन से न्यूज़पेपर में था ये? सर ये बिजनेस स्टैंडर्ड दिल्ली एडिशन पेज नंबर 11 है सर. अच्छा, तो ये वैल्यू पिक्स वो लोग ने बोला है क्या? वैल्यू पिक्स हाँ सैम. मतलब उधर उधर अलग अलग ब्रोकरेजेस का क्या क्या व्यू है वो भी इंक्लूड है सर उसमें. ओके. ओके, फाइन. तो हाँ, आई विल तो से ना ये सैमी एंड यू हैव इंटिव, यस, तो सैमी आल्सो लुक्स बेटर इन दिस. तो आईएचसीएल, तो आई विल से आईएचसीएल तो तुम छोड़ ही दो, रिसर्च करते हो ना, तो सर आईएचसीएल शुड बी टेकन एज अ रेफरेंस. मतलब इट कैन नॉट बी योर गो थ्रू कंपनी. मतलब इंटरव्यू में जाके तुम बोल नहीं सकते सर आईएचसीएल इज अ गुड बेट, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन एवरीवेयर, अवेलेबल इन एवरी सेगमेंट. अब इसमें क्या है, बिकॉज आईएचसीएल का रेवेन्यू स्प्लिट है, 70% आज से आता है. एंड एज आई सेड ना, 30,000 मार्केट का कैप है उसका. इतने बड़े रेवेन्यू पे ग्रो होना इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ, तो हाँ ग्रोथ सर. ये बाकी सब कंपनीज में ही आ सकते, छोटे मोटे कंपनीज में. सर one doubt I had like how to differentiate like one hotel with another like if someone asked me what is the mode of Sammy Hotels then how can proceed with this question तो sir. इसमें क्या होता है, मोट में इसके प्रोडक्ट्स में मोट नहीं होगा, इसके लोकेशंस में मोट होगा. हाँ हाँ वेल ओके. दे आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे ये एक्टिविटीज होती है, और मेजरली वो लोग वहीं लोकेटेड है विथ. और इसका मोट, वन इज द लोकेशन, सेकंड इज द प्राइसिंग. ओके सर. क्वालिटी देने के बाद भी उसका प्राइसिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, ऐसा. ओके सो सर. दिस इज देयर मोट. ओके सर. ओके. Got it sir. Thank you sir. या. या राज वांटेड टू से. सॉरी. नाउ. Hello, am I या. audible, sir? या, यू आर. Yeah, so good morning, everyone. So there is an update about the consumer goods and auto companies capex. So I'll update that. So leading consumer goods and auto companies have stated their capex plans for FY27 remain on track despite the geopolitical tensions from the Iran war, which have led to increase in crude oil prices and input cost, which has partially offset the gains from GST rate cut last year. So coming on to the company specific, Maruti Suzuki has announced a fresh investment of approx 10,000 crores to set up its first assembly line in Gujarat with an initial capacity of 2.5 lakh units per year.
and they are also aiming to scale up the total production to 4 million units by FY30. So they have a capacity of 2.4 million units per annum. So this implies a growth of 67%. So, and according to the managing director of the company, they highlighted that the rising incomes will support domestic consumption, which will ensure demand growth. Now, coming on to the Tata Motors, they also remain bullish on passenger vehicle growth, with the total industry expected to exceed 6 million units by FY30, which will grow at a CAGR of 6 to 7%. And Tata Motors has also planned a capex of rupees 35,000 crores between FY26 to FY30 period, with a focus on new products and also to develop technology. Now, coming on to the Hyundai Motors, they have also planned a capex of rupees 45,000 crores. And if I talk about consumer durable companies like LG, Dixon, and Haier, they have also lined up their capex plan as well. So overall, if I were to conclude this article, then expansion projects have long gestation period and they are unlikely to be altered by short-term disruptions. So, and overall, despite the input cost inflation, rupee weakening, and crude oil volatility, the capex push will be continuing, and India's consumption trends remains intact. And also, overall, it is a positive news for the auto sector. But Raj, my question was, why are they updating? Sorry, why are they expanding? Sir, are you talking about Maruti, sir? Maruti and Honda दोनों कर रहे हैं ना? So what are they estimating? Yes, sir. As we can see that currently they have market share of around 50 to 51%. And already in the last quarter, I think they posted a growth of 0.1%. So they do have a demand, but they are currently having a supply constraint. That's why they are coming up with the capacity expansion. Hello, sorry, you are not audible. I think. Sorry, yeah, you audible now. What were you saying? Sorry. Yeah, sir. I was saying that even in the last month, they posted a growth of 0.1%. So demand was there, but they were not able to meet the demand because of the supply constraints. That is why they are putting up the capex. Okay, हाँ ये last time आया था मारुति का, correct, Yes, sir. correct, correct, हाँ, got it. Fine, fine. Okay. Yeah. Yeah, Mahen. Yes, sir. My news is about Maruti Suzuki. Maruti Yes, go on. Suzuki has approved 101 billion capex for a new plant at Khorat, Gujarat, with phase 1 capacity of 2.5 lakh units per year. The commissioning is targeted by financial year 2029, which making its fifth plant in India. Funding of this project will be done via internal accruals, which signals strong cash generation ability by Maruti Suzuki. Sorry. Current install capacity stands at 2.4 million units, with utilization already near its peak levels. Near-term demand remains strong, especially in SUVs and premium hatchbacks. The capacity is aimed at easing structural capacity constraint, and it is not just a cyclical demand. Talking about what would be its financial impact, the capex of 101 billion is phased. Capex implies moderate FCFF compression over financial year 26 to 29. However, due to internal fundings, it avoids the leverage buildup, which keeps ROC intact. Depreciation and fixed cost absorption will improve as the plant becomes operational post 2029. This addition in 10% incremental capacity over current base of 2.4 million units is a part of Maruti's broader India strategy, which earlier guided 350 billion investment in financial year 2024. So, taking investor view, in near term there would be no volume impact. The benefit of this will kick in post financial year 2029. And also recently we have covered a news that Marutis will be launching 6 to 7 new SUVs by financial year 2032. So this is also in support to that news. Thank you. Okay, fair enough. ठीक है. Anyone else is remaining? Yeah, Rishikesh. Sir, I also write about Maruti.
So Maruti will increase its production capacity by 0.25 million units per unit by 2029. Maruti has a capacity to produce 2.6 million units per annum, including output from Suzuki Motor, Gujarat, which has been amalgamated with Maruti. Maruti is facing capacity issues at existing four production base, Gurugram, Manesar, Kharkhoda in Haryana, and Hansalpur in Gujarat. Maruti will invest 10,200 rupees crore in the first phase of its production base at Koraj Industrial Estate in Gujarat. Maruti will purchase land from GIDC, Gujarat Industrial Development Corporation, for 4,960 crore at Koraj Industrial Estate in Gujarat. My take on this, Maruti is expanding because total four-wheeler segment has grown around 10.5% from last year. But Maruti's year-on-year growth is only 0.1% because although Maruti operate in its full capacity, did not have that production manufacturing. Also, Maruti is increasing. Maruti's SUV sales is increasing and their hatchback sales is decreasing. And SUV sales form around 66% of market share. Therefore, I think Maruti will perform good in future. And point two, Maruti is expanding production capacity 0.25 million, which is around 0.9 to 10% of current production capacity. Therefore, I think Maruti's sales also grew around 9 to 10% in next few years. ऋषिकेश, पहले तो you should not write in crores. Sorry, I missed for others also. Crores में तो लिखा नहीं है तुमको. It is always in billions. Okay, Okay, millions, billions या thousands में. उसके अलावा नहीं लिखना है. okay, 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 okay. okay, And फिर अरे 0.25 million units नहीं होता है. फिर 250,000 units होता है ऐसा. okay. 0.25 million मतलब कितना है? मारुति will increase its production capacity 250,000. लाख उठाया था 250,000 250 के लिखते हैं ऐसा. Okay, ठीक. ठीक है. और बोलते हुए कैसे बोलते हैं 250,000. ठीक है. Okay, okay, के नहीं बोलते. ओके. okay, तो जीरो पे नहीं जाना चाहिए. अभी उधर तुमने मिलियन किया, फिर नीचे मारुति इन्वेस्ट वो 10,000 करोड़ की किया, उधर भी तो बिलियन आना चाहिए ना सर. ठीक है. Okay, sir. ओके. Thank you. Okay. सर बाकी ठीक है. हाँ. सर सर हमारा हाँ, इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग आर इन करोर्स एंड आई मीन न्यूज में भी करोर्स होते हैं, तो इंडिया सिस्टम में से स्टेटमेंट करोर्स भी नहीं चलता है सर. कि तुम इंडिया के लिए सिर्फ काम नहीं करते हो, तुम पूरे ग्लोब के लिए काम करते हो. तुम्हारा बाहर से अगर किसी को देखना है तुम्हारा, तो फिर हम्म बाहर के एफआईएस भी तो होते हैं. एफआईएस मेजर इन्वेस्टर होते हैं इंडिया में. हाँ, हम्म तो ये जो करोड़ में होते हैं ना, हम जब एनालिसिस करते हैं तो, या हम जब मॉडल्स बनाते हैं तो हम मिलियंस में, लास्ट में उसको मिलियंस या बिलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं जब होने के बाद पूरा. सर ऐसा है. मिलियंस थोड़ा मतलब डायरेक्टली ऐसे मीन्स तुरंत समझ में नहीं आता, जैसे करोड़ जैसे बैठता है बताया था ना दिमाग मैंने में ऐसे. मैंने बताया ना, उसमें बताया ना मैंने वो न्यूज़ लेटर के हाँ वीडियो वो में सर कैसे वो करना है आपने वो. बताया सर, वैसे तो कर दिया मॉडल में, लेकिन वैसे ऐसे न्यूज में ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे हाँ तो वो, डायरेक्टली स्कोप नहीं हाँ तो आता उसी, ऐसे. हाँ तो दर्पण उसी का आदत लगाना होता है जो आजकल नहीं सिखाते किधर भी. अचानक से तुम जब इंडस्ट्री में जाते हो तो सब मिलियंस और बिलियंस सुनते हो. कभी पढ़ा ही नहीं होता है मिलियंस क्या होता है, बिलियन. तो हम सोचते हैं अरे मिलियंस मतलब 100 मिलियन, मतलब कितना करोड़. हम्म हजार 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 100 बिलियन बोल दिया मतलब कितना करोड़. वही हम्म प्रॉब्लम होता है. तो वो पहले से ही बात करना है. मिलियन इंटरव्यू में अगर मिलियंस बिलियंस में बात करोगे ना, वो सामने से ध्यान से सुनेगा तुम्हारा कि बात क्या कर रहे हो. हम्म ऐसा है. ठीक है सर. या आशुतोष, Sir, I have the same news like what Shivraj said. He pretty much covered everything. से आ गया. All right. Okay. So I'm going to be speaking about what's going on these days, majorly how the ongoing geopolitical tensions in West Asia, particularly around Iran, could start impacting India's hotel sector. If you look at the operating data first, January was actually quite strong. Uh, it was quite weak because of the previous wedding season. Hotels reported ARR in the range of 9,400 to 9,600 with occupancy at around 66 to 68%, which was majorly driven by weddings.
This indicates that underlying domestic demand remains quite healthy. However, the shift is in the pricing. If you look at the ARR growth, it has now moderated to about 3 to 5%, down from earlier expectations of 7 to 9% because of the ongoing conflicts. Similarly, RevPAR growth has slowed to around 4 to 6% compared to the double-digit growth seen earlier. So it can be concluded that pricing clearly is cooling as demand normalizes post the peak wedding season. Now, luxury and upscale hotels typically derive about 30 to 50% of their revenues from foreign travelers. So, any decline in inbound travel due to flight disruptions, airspace issues, or the overall uncertainty can directly impact high yield segments like MICE, wedding, and premium leisure. And I think EIH is one of the players that is going to be impacted the most because 30 to 40% of their revenue is derived from foreign travelers. With that said, the impact is not going to be uniform. Indian hotels have relatively limited direct exposure to markets like Dubai, which is around 5 to 6% of revenues. So it's not something major, but still it is something to look at. So if you look at the domestic demand, it continues to remain resilient, and that is helping maintaining the occupancy levels as pricing growth slows. So the key takeaway would be that the sector is transitioning from a strong pricing upcycle to a more stable demand-driven phase, where growth will depend more on occupancy stability, margin, and operating leverage rather than aggressive ARR expansion. Okay. Yeah, I think ARR is तो expanded to the peak. I think इसके आगे तो ARR improve नहीं होगा. Yeah, Correct. Because as you see, 10-15,000 is the max that you can charge in India. 20-25 पे होगा तो obviously it will lead to decline in volumes again. exactly. But there are players like Leela. I am not sure how they are able to do that. Sir, Leela ऐसे is कौन से also, I think, pretty much on the expensive side. So the लोग hotels that have higher ARR and RevPAR and like they are hotels that are on the upper end in terms of pricing, I think they are going to be impacted a lot. Sir, So can I was not sure. Sorry. sir, can I add one point? Yeah, man. Sir, instead of focusing on ARR growth, Leela is focusing on expansion, like increasing number of rooms. Recently, we have seen 2-3 news. So this is the growth driver for Leela. Rather than expanding ARR, they are expanding their number of room keys base. No. My question was, how are they able to manage occupancy at that high price? The 50-60,000 is the average ARR. And Yeah. who are the players? ऐसा है कि who are the players? Who are the people in that who are going to Leela? So as Ashok rightly mentioned, 30 to 50% of the revenue is coming from foreign tourists. And probably ऐसा होता है कि लीला में अगर कोई इतना 50-60 हजार रुपए जो खर्चा करता है वो इंडियन नहीं होगा फॉरेनर ही होगा. बट लीला इज नॉट अ बिग ब्रांड एज ओबेरॉय क्योंकि ओबेरॉय बाकी कंट्रीज में भी तो पता है ना कि तुम चलो जब तुम इंडिया से बाहर है तुमको पता है ताज इज अ ब्रांड. बाहर से जो आते हैं तो इट इज नॉट अ ब्रांड इन इंडिया ऐसा है. तो तो पता नहीं लीला हाउ आर दे एबल टू मैनेज क्योंकि लीला पहले ब्रांड नहीं था. अभी बाहर उसके कितने ऑक्यूपेंसी आते थे वो सब मैनेजमेंट को पूछना होता है कि तुम्हारे इधर जो लोग आते हैं वो इंडियंस है या बाहर से आते हैं. बाहर से आते तो डेफिनेटली ये वॉर के कारण वो इम्पैक्ट होगा. एंड इतने 60-70,000 देने वाले लोग इंडिया में है. एंड अगर है तो फिर वो कौन से लोग हैं या फिर वो सेगमेंट में काफी ग्रोथ है एंड वी आर मिसिंग ऑन इट मतलब एज अ रिसर्च. मतलब Sir, उनको ऐसा ना उनको उनको 60-70% ऑक्यूपेंसी करने की जरूरत ही नहीं है. 50 भी किया तो भी उनका तो कॉस्ट निकल ही रहा agree. है. तो उनका 50 का 55 भी हुआ तो इट विल हैव अ गुड ग्रोथ एट दैट हाई रेट. Sir, दैट्स द हाईएस्ट 60% occupancy level is also like higher end for them. Like करेक्ट. achieving 60% is also too big thing for them. टू बिग थिंग जबकि एचसीएल वी आर सेइंग 78% पे फिर भी हम लोग तो हमको लगता है ग्रोथ नहीं है इसका ऐसा है. Hmm. तो ये लीला इज डूइंग समथिंग डिफरेंट तो उस पे काफी मतलब नीश सेगमेंट है which might grow which might not grow. Sir, But Leela, it's so if you look at the foreign travelers, so they majorly go to Rajasthan. And Leela has two, and Rajasthan is also obviously the most growing market.
in terms of foreign travelers. So they have two properties in Jaipur and Udaipur, like one each. So what I have observed is these are the two properties that are going to be impacted a lot because of this conflict that Right, is right. going on. ओके, हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये And एज के भी काफी सारे, ये एज तो फॉरेन yeah, पे डिपेंडेंट है, करेक्ट। these two properties contribute to the revenue like majorly, like 10-15% each of them. ओके ओके, फाइन। तो ध्यान रखो होटल सेक्टर पे, देयर विल बी अ टाइम वेयर आई विल से होटल सेक्टर विल रिवाइव, एंड तब तब तुम्हारे पे होना चाहिए, आइदर इट इज आईएचसीएल, ईआईएच है, विंतीव है, सैमी है, अबू धाबी की रिकवरी तो आएगा। एंड आई विल से टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा गिर चुका है। Sir, it is bottoming out. If you look at the बॉटमिंग आउट, यस, technicals now, all the whole sector it's bottoming out and all are बॉटमिंग at आउट, 30-35% discount. नीचे पर है, करेक्ट, सब कुछ गिरा है। तो अभी वही तुम्हारा है कि यहाँ से क्या, तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ बैकअप विद डेटा पॉइंट। डेटा क्या है, मतलब अभी तो अच्छा है कि अगर इंटरव्यूज में जाते हो तो होटल ही पिच करना है, यही लोग इसी पे खर्चा करने वाले हैं। घर पे गैस नहीं रहा और ना पेट्रोल नहीं रहा, लोग घूमने तो जाने वाले ही है ना। अगेन से ना वर्क फ्रॉम होम का कुछ सिनेरियो चल रहा है, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफिस में बोल दिया है कि दे विल हैव वर्क फ्रॉम होम, Yeah. क्योंकि पेट्रोल प्राइस मतलब फ्यूल का शॉर्टेज है, एंड फ्यूल का अगर शॉर्टेज है, वापस वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो अगेन द सिनेरियो विल गो ऑन कि लोगों के पास बहुत पैसा बच गया है। इफ दैट इज द केस, पैसा तो घूमने फिरने में और खाने पीने में यूज होने वाला है, मेजोरिटी ऑफ द मनी। Sir, I just wanted to add a point that I'm more bullish on Chalet as compared चले, अच्छा, to other क्यों? sectors because it has most of the hotels are in the metro market and it has assets in the most supply constrained markets like Mumbai, Hyderabad, and Bangalore. And the commercial real estate portfolio, it covers the whole debt component of the company. And they're still a small player, so the space and room for growth is quite huge. नहीं, क्या है, आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम विद चले, व्हाई आई डोंट लाइक, आई एम नॉट सेइंग कि तुम गलत हो, मुझे मेरा पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ। चले में की राइटली मैं मेट्रो सिटीज में है, यहाँ पे सप्लाई का नहीं, मेट्रो सिटी में दुनिया भर का कंपटीशन है, एवरी वन इज देयर इन मेट्रो सिटी, एग्री। Yeah. ताज है, ओबराय है, ईआईएच है, शाले है, सैमी होगा, विंतिव होगा, सब लोग है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वेयर इज द ग्रोथ कमिंग फ्रॉम? सप्लाई कंस्टेंट है तो चलो ऑक्यूपेंसी 80% पे है, अभी उसी का वैल्यू है उसका, शाले का जो भी वैल्यू है आज, 80% ऑक्यूपेंसी रेट इन मेट्रो सिटीज। वेयर Yeah. इज द ग्रोथ कमिंग फ्रॉम? व्हाट इज शाले डूइंग डिफरेंटली? एंड आई विल से शाले का जो, आई थिंक जेबीडब्ल्यू मैरिट है ना उसका, Sahar. Yes, sir. Yes, sir. सो जेडब्ल्यू मैरिट इज नॉट अ प्रिफर्ड ब्रांड इन माई सेगमेंट। तुम देखोगे तो, मतलब जितना मैंने देखा है, जितने मैं मुंबई में था, मेरे जितने मीटिंग्स हुए, आइदर इट हैपेंस इन ताज या ओबराय में थे। आई नेवर वेंट टू जेडब्ल्यू मैरियट इन मुंबई। मतलब हमारे जब मीटिंग्स होने के ना, कॉर्पोरेट इवेंट्स होने के, ताज वाज द प्रेफर्ड बेट, सेकंड वाज तुम्हारा ओबराय, ठीक है। अभी क्यों? बिकॉज दे उनका लोकेशन ही ऐसा है, कॉर्पोरेट एरिया में है। अभी भले शाले मुंबई में है, उसके जो होटल्स है ना जेडब्ल्यू मैरियट के दोनों होटल्स, इट इज इन द लीजर डेस्टिनेशन ऑफ मुंबई। मतलब आई विल से जहाँ पे अमिताभ बच्चन रहता है, उसके बाजू में उसका एक जेडब्ल्यू मैरिट है, मतलब उधर। और वो ना, वो दैट एरिया इज अबाउट बंगलोज पूरे, मतलब मुंबई में ऐसा बहुत रेयर सिनेरियोस जहाँ पे ऐसे बंगलोज होता है, और बंगलोज के बीच में एक होटल है उनका। तो वहां पे Yeah. ऐसा कॉर्पोरेट मीटिंग्स तो वहां पे होने से रही, बिकॉज वो कॉर्पोरेट से पूरा दूर है। एंड इट इज, आई विल से इट इज अ फ्लैग एंड ऑफ, मतलब एक जो साइड मुंबई का जो साइड है वहां पे, एंड सेम आई थिंक 2-3 किलोमीटर के रेंज में उसका दूसरा होटल है मुंबई में, ठीक है। तो वहां पे ना मीटिंग्स होने का कोई चांसेस ही नहीं है। वहां पे तुम लीजर के लिए जाओगे, मतलब बोलते हैं मेट्रो सिटीज बट जाते लीजर के लिए, ऐसा ऐसा सिनेरियो। अब ये मैंने ऑब्जर्व किया मुंबई में। आई केम टू पुणे, पुणे में भी आई सॉ जेडब्ल्यू मैरिट इसी सेनापति बापट रोड पे है। इफ यू आर फ्रॉम मुंबई पुणे, अशोक, यू आर फ्रॉम मुंबई पुणे ना, वो सेनापति बापट रोड पे है वो जेडब्ल्यू Yes, मैरिट sir. Near है to क्या? Pavilion Yes, Mall. sir. नियर टू Yes. पवेलियन मॉल, हाँ। आजू बाजू है क्या कोई कोई कॉर्पोरेट पे पवेलियन मॉल के आसपास, देखा तुमने? नहीं सर, अरे ना, प्रॉक्सिमिटी में नहीं है।
कोई नहीं है। पुणे का कॉर्पोरेट कहाँ पे? हिंजेवाड़ी एंड कराड़ी, दिस आर द बिग टू यस। कॉर्पोरेट्स। हाँ। दोनों दोनों जगह पे विंतीव का बिल्कुल। हयात है, एंड हिंजेवाड़ी में भी है, हयात है। यस और सर, फिर रिट्स उसके कार्ल्टन अलावा एंड ऑल। रिच कार्ल्टन एंड ऑल, हाँ हयात है, और आई थिंक नोवोटेल है, ठीक है वो लिस्टेड नहीं है, नोवोटेल वो सब है। तो ये दो है, तो ये मैंने नोटिस किया शैले में, आई नोटिस दोनों जगह मैंने देखा। फिर पुणे में नहीं ना सर, उनका होटल सर है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। पुणे हाँ, का जो JW मेरिट है वो सर वेंटिव का है सर। वेंटिव है सर। वेंटिव का, अच्छा ओके। यस। हाँ। जैसे मुंबई का हो, हाँ सॉरी इसका नहीं, ये वाला नहीं, सेनापति वापर का नहीं, उनका ना एक इधर है नियर द स्टेडियम। कौन सा गौंजे। स्टेडियम है? वो जो MCA। मैचेस होते हैं ना इंडिया आईपीएल MCA के, सर, गौंजे। एमसीए स्टेडियम, हाँ। वो आई फॉरगॉट द नेम, बालेवाड़ी स्टेडियम, वो बालेवाड़ी बोलते हैं नो सर, बालीवाड़ी इज डिफरेंट। क्या? हाँ, तो वो MC जगह जा। पे उसका तो वो जगह पे उसका एक जेडब्ल्यू मैट वहां पे एक है। तो बीच में एक न्यूज था कि अगर ना कोई आईपीएल का टीम था विच वाज एक्सपेक्टेड टू हैव देयर होम टाउन इन सॉरी देयर होम होम ग्राउंड इन पुणे, यस तो सर। तभी जेडब्ल्यू मैरिट का ग्रो होगा, ऐसा है। तो ये प्रॉब्लम है जेडब्ल्यू मैरिट का, आई थिंक द ब्रांड का ये प्रॉब्लम है। ओके। तो ये व्हाट आई And sir, फाउंड इन शाले। Mumbai JW is located in front of Mumbai International Airport in Sahar. वो Coming सहार है, up with हाँ the वो Taj सहार है। property as well. It's a हाँ, हाँ वहाँ three पे तो बहुत कुछ है। property at the airport. हाँ, there are a lot of branded hotels. यस, तो ये प्रॉब्लम है शाले का, और नथिंग एल्स, दैट्स द इशू विद शाले, So दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक। if I want to pitch it to in someone in the interview, so can I नहीं do मत it करो, or should I? शाले मत करो, शाले मत करो, ऐसे तुमको क्वेश्चन आएंगे। मतलब देखो मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसके लिए मुझे पता है। तो Okay. ऐसे अगर तुमको क्वेश्चन आएंगे तो हाउ आर यू गोना टैकल दिस क्वेश्चंस? तो इसके लिए मुझे अच्छा लगता है, सैमी अच्छा लगता है, विंतीव अच्छा लगता है, ईएच भी आई डोंट लाइक पर्सनली, मोट नहीं है उसमें, ऐसा है। Yeah, it's a they have limited properties or मतलब ऐसा there's not something different. I agree what you said. करेक्ट। तो ये शाले का एक दो है वो, उसके ना अभी जो रेनिसेंस है ना, एक रेनिसेंस आई थिंक शाले का ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। No sir, लेकिन Renaissance इसका तो है। सैमी का है सर, पुणे में जो। सैमी का है, नहीं नहीं सॉरी, मुंबई का जो है अहमदाबाद वो, में जो। अच्छा, ओके ओके, मुंबई। मेरे को वेस्ट इन नॉट द सैमी, सॉरी West वेस्ट in इन। Powai, yeah. वेस्टिन इज बाय चैलेंज, शायद। शाले ना, हाँ तो वो भी अभी वो भी ना, वो जगह क्या हो गया, वो जगह इट वाज अ लीजर प्लेस, ओके पवे वाज अ लीजर प्लेस, वहाँ पे कॉर्पोरेट में, पर अभी अचानक से दो तीन कॉर्पोरेट्स वहाँ पे आए हैं, बैंक ऑफ अमेरिका आया है बाजू में, तो वो दोनों होटल्स फुल हो जाते हैं उसके, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर शाले, वो एक अच्छा हुआ है। बट वो काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि जो पवई था इट वाज अ लीजर प्लेस से कंपेयर ना, इट इज बिकम अ नाउ अ कॉर्पोरेट प्लेस, पहले भी था कॉर्पोरेट प्लेस, बट वो ना, वो कॉर्पोरेट सी होटल्स में कौन रहता है, द वन हु कम्स फॉर अ आई विल से जो सीईओ या बड़े पोजीशन पे थे, वो लोग को कंपनी उधर रखती है। भी पवई में था, पवई मार्केट था, क्रिजिल था पवई में, काफी है ना, स्टैंडर्ड चार्टेड है, वो आरंग का है, सब पवई में है। बट वो होटल हमेशा खाली रहने के, पहले रेनिसेंस का नाम, नाउ इट हैज चेंज टू वेस्ट एंड, तो उसके दो है वहाँ पे, एक आई थिंक उनका ना वो सर्विस अपार्टमेंट भी हो गए हैं, यू कैन स्टे लाइक 1 BHK में रह सकते हो, ऐसा टाइप्स। हाँ, तो वो दोनों एक एक ही है शाले कैंपस का। में सर। हाँ दोनों एक ही आस पास कैंपस में में, ही है। वो है क्या? हाँ, वो एक है, पर ऐसा है कि अभी वो तो सब आ गया है, दैट हैज बिन यू नो क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टॉक प्राइस, अभी ग्रोथ कहाँ से आएगा, So क्वेश्चन वो आता है। they are expanding into leisure space as well. हाँ, तो So वो ध्यान रखना है कि लीजर स्पेस में क्या है, हाँ, they बिकॉज are तुम्हारा जो फर्स्ट मोड था ना कि uh, पे है क्या तुम्हारा supply constrained market, Mumbai. सप्लाई का, तो वो नहीं है, तो दैट इज नॉट द मोड, ऐसा है। Okay. फिर जब तुम बोलोगे सर एक्सपांड हो रहा था, एक्सपांड रेवेन्यू कितना आ रहा है, 10-15% तो रेवेन्यू एक्सपेंशन से आ रहा है, मेजरली 80% तो इसका मुंबई या मेट्रो Hmm. सिटी से आ रहा है, तो उसमें अलग क्या हो रहा है? तो उसमें अलग क्या हो रहा है, तो इफ यू कैन डिफेंड करो, डिफेंड कि सर नहीं लोग जेडब्ल्यू मैरिट में ही जाएंगे, ताज में नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों? तुम बताओ ऐसा क्यों Yeah. है, तुम्हारे पास आंसर तो बताओ। No, sir. हाँ ऐसा है। फिर व्हाट यू डू इज फॉर दैट सेंस यू ट्रैक द ऑक्यूपेंसी रेट, की ऑक्यूपेंसी हो क्या रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल में बोल क्या रहे हैं, ये हाउ आर दे एबल टू टैकल दिस काइंड ऑफ कंपटीशन, एंड ताज को compete करना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड Hmm. जेडब्ल्यू बोला ना, जेडब्ल्यू मैरिट में मेरे आज तक, नॉट इवन माय फ्रेंड्स नाउ आल्सो,
हमारी जो मीटिंग्स होते हैं जेडब्ल्यू मैरियट में कभी भी मीटिंग नहीं हुई है, नॉट इवन अ सिंगल टाइम, मीटिंग्स नहीं होते वहां पे, ऐसा है। ओके। एंड अगर मुंबई में अगर तुम बोल रहे हो कॉर्पोरेट अगर बढ़ गया, ठीक है, लेट्स से यू से दैट अचानक से कॉर्पोरेट इवेंट्स बढ़ गए, या चलो कॉर्पोरेट मीटिंग्स बढ़ गए, ऑक्यूपेंसी बढ़ने लग गई, तो सिर्फ शैले की नहीं होने वाली, सबकी होने वाली है। हम्म। करेक्ट, इट इज नॉट ओनली दैट शैले विल बेनिफिट। बट सर आपने बोला अभी कि अ, ये जो इनकी पवई में प्रॉपर्टी है, अर्लियर दैट एरिया वाज नॉट लाइक सराउंडेड बाय कॉर्पोरेट एंड हाँ, एवरीथिंग, बट नाउ द ऑफिसेज हैव स्टार्टेड कमिंग अप। करेक्ट। तो तो ये एक ही प्रॉपर्टी ना उसका, वही तो प्रॉब्लम, ओनली वन प्रॉपर्टी हम्म। है। तो We should मैंने look मैंने at तुमको ये their मोड बताया। we should look at their like how much room there is, like रूम दे how रहे, much हाँ, space, like not room is not our keys, that how much they can grow from current occupancy level to that higher one, like how करेक्ट, much space is there to. करेक्ट, सर अथीवा वही का देयर वाज सम, अथीवा, हाँ। because earlier it was Duke's Retreat, but हम्म, after they repositioned it to Athiva, they were able to increase the ADR from 8,000 to 14,000-15,000 range. 10,000, यस यस, वो भी एक है Right. ड्यूक का। And करेक्ट, they are coming up with 6 Athiva properties with 900 keys in total in the next 2-3 years. करेक्ट, नई और मुंबई, आई थिंक अक्सा बीच पे है, हाँ। वारका गोवा, बम्बोलिन एंड, अभी देखो वापस ना व्हाट आई फील इज, अगेन मुंबई, अक्सा बीच, वापस मुंबई, हम्म। वारका गोवा, गोवा ऑलरेडी अ मार्केट विच इज पेनिट्रेटेड, वापस बैम्बोलिन गोवा। तो ठीक है, ये दिस कैन हैव अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, बट वही तुमको इंटरव्यू में वही पूछेगा कि ये क्यों, ताज क्यों नहीं, या ये क्यों, ओबराय क्यों नहीं। तो तुम्हारा आंसर क्यों डिफाइन, जैसे मैंने तुमको बोला रेनिसेंस में पहले नहीं था, ऐसे हुआ, तो तुमको, तुम्हारे पास अगर ऐसे आंसर है तो बताओ, मेरे पास नहीं है कि लोकेशन वाइज। बस भी नहीं। हाँ, तो अभी वो नहीं समझेगा ना, इफ यू आर नॉट इन दैट स्पेस। मुझे पता है क्योंकि मैं मुंबई में हूं, इसके लिए मुझे पता था। तुमको नहीं पता होगा सिंस यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई, मेरे को पता भी नहीं होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कोई एरिया क्या है। करेक्ट, तो ये एक, आई फील इट्स अ प्रॉब्लम विद शैले, ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है। आई एम नॉट सेइंग कि खराब है कंपनी, मतलब उससे अच्छा कोई और चूज किया तो बेटर है इसका। मुंबई मेट्रो में, आई एम लुकिंग एट दिस प्रेजेंटेशन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इसका एआरआर इज अराउंड 10,000, एडीआर, रेफ पार 7,000 के आसपास है। ऑक्यूपेंसी नहीं दिया है इसने, ऑक्यूपेंसी रेट बेंगलुरु में देखो, लास्ट इसके क्वार्टर में बेंगलुरु हैज डिक्लाइन, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, एनसीआर, हम्म। ये तो उधर सब लोग पड़े हैं ना, ऐसा कोई है नहीं अलग जो इसमें कोई अलग है ये एरिया में, एवरी वन इज देयर इन दैट सिटी। तो तुम मुझे इसका मोड बताओ क्या है, क्वेश्चन ही आता है। अब ये उसके दूसरे वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, वहां से उसका ग्रोथ आ रहा है, बट देन हैव अ क्लोज लुक एट वो इट, भी, एज ऑफ नाउ तो नहीं चला। it is going to stagnate in the next 3-4 years. Hmm. Because no new property under that commercial space. नहीं, बोल तो रहा है, देखो इस सेइंग अथीवा गो, अथीवा स्पा एंड रिसोर्ट खंडाला रिनोवेशन एक्सपेंशन हो रहा है, 117 की ऑपरेशनल है अभी उधर। फिर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 300 की, 400 हाँ। की दे आर लॉन्चिंग। फिर साउथ गोवा वापस अथीवा, और Two, फिर so ये come up सिग्निस with four पावर। resorts. So one is in Thiruvananthapuram, two in Goa, and हम्म, one is somewhere else. I don't remember the name exactly. याद, याद Aksa भी, Beach and Khandala, अक्सर बीच and खंडाला, हाँ। and Vashi property is also Hmm. under Athiva. ये पता है, इफ यू रीडिंग अबाउट गोवा, गोवा के आईएचएल की बात की, आईएचएल ने पता है बोला कि गोवा इज पीक्ड आउट, ऐसे बोला था, मतलब गोवा का जो ग्रोथ है ना वो पीक्ड आउट हो गया है, वहां पे ग्रोथ नहीं, Hmm. ऐसा ऐसा आईएचएल ने बोला था उसके कॉन्फ्रेंस कॉल पे कि हमारा रेवेन्यू वहां से कम नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं आ रहा है। मतलब जो है Stagnant. ऑलरेडी उसके 4-5 आईएचएल के तो भर भर के प्रॉपर्टीज है गोवा में, 3 तो ताज ही है उधर, सिर्फ गोवा में 3 ताज है, 3 अलग अलग, और उसके बीच पे 3 अलग ताज है, फिर उसके बाद विवांता है, फिर उसके बाद जिंजर है, वो सब उसके पड़े हुए हैं अभी। और एक, और वो बोल रहा है कि हमारा ग्रोथ पीक आउट हो गया, यहाँ से ग्रोथ होने नहीं वाला है। एंड ये अथीवा वापस गोवा में लॉन्च कर रहे हैं, मतलब वही EIH इज लॉन्चिंग, इचालेट इज लॉन्चिंग इन गोवा।
फिर अभी भी लिखा है 36 मंथ्स पोस्ट अप्रूवल, या बाकी अप्रूवल आना बाकी है। तो ऐसा क्या है, हाँ अभी एक एक आता है कि वो रिसोर्ट एंड स्पा में ना कि थोड़ा वेलनेस वाला बढ़ रहा है, इसके लिए हम स्पा में जाएंगे। तो हाँ, सिर्फ जस्ट जैसे इमेजिन। हाँ, तो वो तुम सब सोचो ना प्रैक्टिकली, तुम क्या गोवा स्पा के लिए जाते हो? नहीं, हाँ वो तो सर जो आपने स्पा वाली बात बोली वो तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। आई एग्री टू दैट। अब सोलो हाइप हो रहा है कि हाँ वेलनेस के लिए जा रहे हैं, वेलनेस ठीक है, मतलब कितना प्रैक्टिकल है, कितने लोग जाते हैं ऐसा वेलनेस के लिए? तुम होटल में स्पा देख के जाते हो क्या? नहीं। अब है तो अच्छी बात है, बट देख के थोड़ी जाते हो कि इसमें स्पा, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। करेक्ट। ये पता नहीं क्या खाली फुकड़ कॉन्फ्रेंस कॉल पे बोलते हैं वेलनेस एंड स्पा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा भी करेंगे ना फिर ताज को कितना टाइम लगेगा वेलनेस एंड स्पा करने में? होगा वो कितना टाइम लगेगा टू जस्ट ब्रिंग सम मसाज मसूज इन दैट होटल एंड स्टार्ट गिविंग यू सर्विसेज? थोड़ी है तो, खाली बट फुकड़ वो बड़ा चीज बताए रिसोर्ट एंड स्पा। सर व्हाट आई थिंक इज कि इनका अभी वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंस नहीं है। देयर जीरो प्रॉपर्टीज इन गोवा एंड ऑल दीज मार्केट्स वेयर दे आर प्लानिंग टू एक्सपांड। सो कुछ नहीं से कुछ तो सम ग्रोथ विल कम टू देम, सम ऑफ द मार्केट हाँ शेयर फ्रॉम अदर कंपनीज दैट विल लीड टू ग्रोथ। करेक्ट, हाँ। तो इस केस है ना, तो वो सब ना ऑलरेडी स्टॉक में वो प्राइसिंग हो गया होगा, कि जैसे अगर तुमको समझ रहे हो तो उसको भी समझ ही रहा है ना। एंड नाउ यू आर बेटिंग ऑन द सी, तुमको बेट करना है, व्हाट आर वी बेटिंग ऑन द टूरिज्म पार्ट। हमारा थीम क्या है कि सर लोग पैसा घूमने के लिए स्पेंड करेंगे, ठीक है? करेक्ट। तो घूमने के लिए तुम्हारे ही होटल में क्यों जाएगा? मेरा हमेशा यही होता है कि तुम्हारे ही होटल में क्यों आएगा। आई लाइक दैट काइंड ऑफ रिसर्च। चलो मैं बोलूँ ये नजदीक है, जैसे तुम गोवा 2 बार जा रहे हो, सेकंड टाइम भी तुम विल यू प्रीफर अथीवा? नो। हाँ तो क्यों? होता है, हो सकता है कि हाँ लोकेशन अच्छा है, ये है वो है, अच्छा होटल लगा है, तो वो है। तो गोवा का टूरिज्म तो पीक आउट हो गया है, यू आर राइट कि सर कुछ नहीं तो कुछ तो आ जाएगा। बट कुछ तो आ जाएगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज शुड किक इन ना, तो कुछ तो आने को तुमको ऑक्यूपेंसी कितना चाहिए उधर गोवा में? जबकि ताज जैसा प्लेयर बोल रहा है हमारे पास ऑक्यूपेंसी नहीं है, ये जाके बोलेगा अचानक से हम ताज से अच्छे और हमको ऑक्यूपेंसी दो, मतलब हमारे इधर लोग आएंगे। और तुम ही बोल रहे हो कि सर वो ड्यूक का 8,000 से 14,000 कर दिया। हाँ। तो इससे क्या हो रहा है कि हाँ प्राइसिंग बढ़ रहा है, मार्जिन एक्सपांड होंगे। अभी खंडाला इस एरिया, उसने भी लास्ट टाइम बोला था कि खंडाला में एरिया में बोलता है कि हमारे 4 दिन में फुल व्यूअर सोल्ड आउट, हाँ, ऐसा पाँच उसने बोला। दिन Yes, sir. Yes, हाँ sir. 5 दिन। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है, सभी सोल्ड आउट थे उधर, वो अकेला सोल्ड आउट नहीं था, हाँ सर, सभी वो सोल्ड तो आउट। लॉन्ग वीकेंड था इसलिए। तो एक क्वेश्चन आता है, वाई वाई ओनली चैलेंज, बाकी भी तो है। तो वो क्लोजली ट्रैक किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यू आर टोटली रॉन्ग इट, पर आगे तो ये सब क्वेश्चन आएंगे तुमको। तो आई विल सजेस्ट है ना ऐसे कोई कंपनीज पर रिसर्च करना है जहाँ पे क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे एंड सेंसिबल आएंगे, ऐसा है। ऑल राइट। मतलब मैं तो क्यों विनती पे फोकस कर, क्योंकि आई एम इन पुणे सैमी, क्योंकि मुझे पता है उसके ऑर्डर इधर दिखते हैं। मैं ऐसा हूँ, मुझे इंडिया के मतलब पुणे के बाहर भी मैं नहीं जा रहा हूँ कि पुणे में मुझे ये दिख रहा है। जैसे पुणे में ऐसा हो रहा है तो आई अज्यूम कि चलो हैदराबाद में भी ऐसा होगा, बैंगलोर में भी ऐसा होगा। तो वो कौन से एरिया में, तो आई ट्रैवल टू हैदराबाद, बैंगलोर मेरी वाइफ थी, मुंबई से तो आई बिलोंग फ्रॉम मुंबई। तो ये 3 सिटी का तो मुझे पता है क्या है। एक गुड़गांव का नहीं पता मुझे ज्यादा, गुड़गांव और कोलकाता का मुझे, आई एम नेवर बीन देयर कि एरिया कैसे होता है, एरिया का नाम क्या होता है, दैट्स इट। मतलब आई नो द मेजर मेट्रो सिटीज या ग्रोइंग सिटीज, हैदराबाद के बारे में पता है, पुणे के बारे में पता है, मुंबई के बारे में पता है, एंड बैंगलोर थोड़ा बहुत पता है, मेरे फ्रेंड्स है वहाँ पे, तो आई नो दैट। तो आई डोंट हैव एनी कनेक्शन इन गुड़गांव एंड नॉर्थ ईस्ट साइड पे। तो व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, चलो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है तो होटल का ग्रोथ होगा। और ये 3 सिटीज तो आई हैव बीन देयर, तो मुझे पता है क्या चल, मतलब आई कैन एटलीस्ट टॉक ऑन दोस पार्ट कि हैदराबाद में कौन से एरिया में जो होटल है वो चलेगा, ऐसा टाइप्स। सर बट तो इफ अगर हम 7-8 कंपनीज में से देखें तो लीव IHCL बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ बिग कंपनी इन द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एंड एवरीथिंग। ITC इज अगेन ऑन द लग्जरी एंड अपर अपस्केल सेगमेंट। फिर बचता शैलेट, वेंटिव एंड लीला, सैमी, ये जो सेम मार्केट कैप में। फिर लीला अगेन इट्स अ हायर एंड लीला तो एक्सपेंसिव अलग है, राइट। हाँ। तो फिर बचती तो दो ही कंपनीज है, शैले और वेंटिव। हाँ शैले वेंती और ये भी है ना, सैमी भी है ना।
ओके, बट सैमी भी आई थिंक उसी में। का भी मार्केट कैप और बहुत कम है। सैमी का कितना है? 3 है, हाँ सैमी तो काफी छोटा है, हाँ सैमी तो हाँ। काफी छोटा है। हाँ तो हमारे वही शैले विंटेज एंड ईएच यही बचते हैं। तो EI वही है। ईएच, तो वही आई एम नॉट सेइंग यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग बी प्रिपेयर टू डिफेंड योर थीसिस, और कुछ नहीं। Okay, so हो सकता है। if I'm able to defend the questions, then it's okay, yeah. हाँ हाँ, जैसे मैंने तुमको पूछा, अज्यूमिंग ये क्वेश्चन भी तुमको आएंगे मार्केट, अगर कोई होटल ट्रैक करता होगा तो जस्ट बी नो कॉन। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मैं गलत भी जा सकता हूँ ना, तुम बोल रहे हो चले अच्छा यहाँ से स्टॉक बढ़ भी सकता है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो कि सर यहाँ से 2-3 ग्रोथ आ रहे हैं। तो डेटा पॉइंट्स, जस्ट टेल मी डेटा पॉइंट्स क्या है, कैसा ग्रो होगा, तो ऑक्यूपेंसी क्या है, कौन से होटल्स आ रहे हैं, एंड इज इट बेटर टू ट्रैक ये 3 कंपनी। सो आई थिंक सब अभी मैं देख ही रहा हूँ, 14,000 इज विंटेज मार्केट कैप, शैले 16,000, ईआई इज 19,000, सब Right. वही रेंज में है। हाँ तो अभी तुम ये फाइंड करो ये तीनों होटल्स में ऑक्यूपेंसी कितना है, इसके टर्नओवर कितना है, एसेट टर्नओवर, मतलब इनके कितने प्रॉपर्टीज है सबके, क्योंकि मार्केट कैप सबका सेम है, तो इनके प्रॉपर्टीज कितने, रेवेन्यू कितना करते हैं, क्या एआरआर में क्या, तो आई थिंक ईआईएच का सबसे ज्यादा एआरआर ईआईएच का होगा कंपेयर हाँ, टू शैले एंड विंटेज, Yes, sir. ऐसा है। करेक्ट। करेक्ट। तो और ईआईएच का हमको पता है मेजरली रेवेन्यू आता है बाहर से, हम्म बाहर से आता है, तो ईआईएच, तो ये सिनेरियो में ईआईएच विल हैव लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, बचा शैलेट एंड विंटेज, एंड सैमी मे बी अ थर्ड पार्ट, Sir, यूनिपर भी one है। I had one doubt. Like हाँ, only Sammy has a lower market cap. So on that basis, can we exclude that Sammy hotels under our evaluation? नहीं एक्सक्लूड नहीं, कंपैरिजन नहीं होगा, ऐसा है। कंपैरिजन करते वक्त थोड़ा सा इशू होगा कि तुम एक छोटे कंपनी को बड़े कंपनी से कंपेयर कर रहे हो, मतलब लेट्स से विंटीव इज अ ब्रांड, सैमी ब्रांड नहीं है, सैमी मैनेज करता है होटल्स, करेक्ट। हाँ सैमी का आई थिंक दे डोंट ओन एनी होटल्स। सर जुनीपर होटल्स भी है ना सर, वो हयात ब्रांड नीपर वाले। भी है, हाँ हयात ब्रांड वाला, यस। है तो सब लोग करते हैं ये सब, एक दूसरे को ओन करते हैं, ऐसा है। और सर, if we look at the mid-scale segment in economy, then there's only one player, Lemon Tree. लेमन ट्री, अभी वो तो स्प्लिट हो रहा है, लेमन ट्री और फ्लेयर होटल, तो Yeah, स्प्लिट yeah. होने के बाद बात करते हैं क्या है वो। अच्छा आई विल से, मैं उसी में बात कर रहा था आशुतोष, आई एम अ बिग फैन ऑफ लेगेसी रादर देन सेइंग मैनेज्ड होटल्स। मैनेज हम्म होटल का क्या प्रॉब्लम है ना, कि तुम्हारा कोई ब्रांड नहीं है, तुम किसी दूसरे जैसा कर रहे हो ना, फ्रेंचाइजी मॉडल, वही जहाँ जाके तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैं इस पे जाके एक्वायर करूंगा, क्या ब्रांड चलाऊंगा, तो इसमें क्या है, तुम कितना पैसे कमा लोगे, हाँ, वो ऐसा है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाती है फिर। कितना मतलब दूसरे का ब्रांड है, चला रहे हो, ठीक है चल रहा है तब तक ठीक है, एसेट लाइट मॉडल, देयर इज नथिंग द ब्रांड दैट यू क्रिएट, ऐसा है। हम्म आई लाइक बिकॉज इट्स अ ब्रांड, ये का भी एक ब्रांड है, तो विंटिव का भी है, विंटिव एंड तुम्हारे ये सैमी होटल्स, सैमी नहीं, विंटिव एंड कौन सा था और, Chalet. चैलेंज, चले। चैलेंज, ये खुद के है उनके कंपनी, तो ठीक है खुद का और अलग है। अभी लेमन ट्रीज प्योर प्योर योर मैनेज होटल्स, तो उसमें फ्लेयर का था, वो फ्लेयर होटल्स का था पार्ट, तो आई स्टिल लाइक लेमन ट्री ऑन दैट पार्ट। लीला का भी, लीला के तो खुद के ही है। हाँ, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, खुद के में सिर्फ है कि बड़ा कैपेक्स होता है, चलने का प्रॉब्लम, मतलब आगे जाके आई विल से ना, पूरा 10 साल इंडस्ट्री चला ही नहीं है ये सब। मैनेज होटल में ये रिस्क नहीं होता है कि नहीं चला तो नहीं चला, ठीक है, उनका क्या नुकसान होने वाला है, सिर्फ द एम्प्लॉय कॉस्ट इज द कॉस्ट, ऐसा है। तो ये एक बड़ा रिस्क है इन द ब्रांड। तो मैं बोलूंगा अगर तुम्हारे पास ब्रांड नहीं है, कैपेक्स नहीं है, तो तुम कितना कमा लोगे। ग्रोथ तभी होगा जब तुम कैपेक्स करके ग्रो होते हो। टर्नओवर, एसेट टर्नओवर इज द वन दैट यू सी, फेयर इनफ। सर, शैले वरना का मोर there's वन मोर थिंग आई लाइक दैट, तो उनका कमर्शियल रियल एस्टेट और ये पोर्टफोलियो ना, दे आर एबल टू फंड देयर एक्सपेंशन फ्रॉम दैट। एक्सपेंशन, हाँ हाँ, करेक्ट, वो भी एक पार्ट है, वो मैं बोला था कमर्शियल भी है उनका, वो अच्छा चल रहा है, वो एक है। व्हाट दे कॉल इज डुअल इंजन मॉडल। तो अगर करेक्ट, हाँ। बाकी कंपनीज में जैसे हो पूरे सेक्टर में ग्रोथ स्लो हो जाती है, तो शैले इज एन एडवांटेज दैट दे आर गेटिंग रेवेन्यू करेक्ट। फ्रॉम द कमर्शियल रियल एस्टेट। तो फिर यही सब अभी डेटा पॉइंट करना कि उसका मेन से कितना आता है, कमर्शियल से कितना आ रहा है, मैनेज से कितना आ रहा है, और स्पेसिफिकली तुम बोल रहे हो मुंबई मेट्रो सिटी है, तो मेट्रो सिटी से कितना उसका रेवेन्यू, अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू कितना आ रहा है, और एक्सपेंशन से कितना आएगा। MMR से सर ये आता है करंटली 55%। 55 है ना, हाँ वो
ऑफ MMR, फिर बैंगलोर भी होगा, मतलब वही 60-70% उसका तो इधर से आ रहा है। 21% is from Bangalore and 70 13% is from Hyderabad, and then तो हो गया 5% to Athiva. तो मतलब पूरा इधर से ही आ रहा है उसका, हाँ, उत्तर दिल्ली majorly से आ it रहा was 65% back in 2019, but now they are able to gradually like make it low in the है। end. तो अभी फिर तुमको वही बताना है कि ये ग्रोथ, ये कहाँ से ग्रो होगा, Hmm. ऐसा है। ठीक है, इफ दैट ग्रोस देन सही है, ऐसा है। Sir, वरना is क्या Sir, बोलते sir, in recent quarters, हैं? particularly Bangalore and Hyderabad micro markets give the opportunity to these hotels to push their ARR like a little bit more compared to other micro markets. सॉरी सॉरी, कम अगेन। Like particularly these Bangalore and Hyderabad markets, these two markets has shown a big rise in ARR, sir, बिग compared राइज to नहीं आ रहा, other यस यस, business हाँ, hubs. अदर मार्केट्स, So यस, Hyderabad particularly because of GCC, इसी यस, हाँ। and Bangalore's that Whitefield area and overall the core that IT hub. Uh, so both are driven by GCC segment. बट बैंगलोर इज इन पिकअप, कि बैंगलोर में मतलब काफी नेगेटिविटी आ रही है सोशल मीडिया पे ओवरऑल। A नॉट श्योर, little bit, नॉट but श्योर द quite ग्राउंड, like नॉट still until recent quarters they have shown the rise, राइज, हाँ। sharp rise in ARR growth particularly, even though there is a high supply. And the hotel, I have heard 2-3 con calls of different players. So everyone is saying that there is a demand supply gap in a Bangalore बैंगलोर market. हो सकता है। Even though there are a lot of players. नहीं, सब लोग गाली तो देते हैं बैंगलोर को, बट जा जाके सब मेरे फ्रेंड उधर ही नौकरी कर रहे हैं। Hmm. उससे बैंगलोर ऐसा है, बैंगलोर वैसा है, बट मेजोरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स, वाइफ के फ्रेंड्स भी, वो लोग वहाँ पे ही है। They are okay with whatever happening because I think salary is good in Bangalore compared to other cities. And Hyderabad is obviously a growing one. Hyderabad is growing one, sir. पुणे में तो आईटी है पूरा, तो आईटी वाला है तो तुम पुणे रहते हो। फार्मा आईटी में फाइनेंस इज ग्रोइंग अ बिट। So Bangalore mein demand is somewhere around 8% and the supply is 3.5%. So there's a huge demand supply gap. ओके। Same is the case with Hyderabad, 8% to हैदराबाद, 12%. हैदराबाद तो ओवरऑल सिटी इज ओनली एक्सपांडिंग, पता है। Hyderabad is a good market. गुड मार्केट, यस, एंड ग्रोइंग मार्केट, मतलब वहाँ पे Hmm. इवन रियल एस्टेट आई विल से इन्वेस्ट करना, रियल तो हैदराबाद में इन्वेस्ट करो रादर इन मुंबई और पुणे। And the earlier like past earlier base is compared to low, that's why there हाँ, is high growth करेक्ट, relatively. करेक्ट, 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 फेयर एनफ, फेयर एनफ। तो या ये शैलेट का अगर तुम देखते हो आशुतोष तो थोड़ा रिसर्च Yes, करना। sir. Okay. ओके, 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 किरण, Okay. आई थिंक विल टेक अ लास्ट वन। किरण, Hello. किरण, you there? Yeah, Hello. Sir, I have prepared a news on Maruti Suzuki. Maruti It is only ना, already अच्छा, covered. ऑलरेडी कवर, ओके, Sorry. ओके, फाइन, It is फाइन, all. फाइन, नहीं ठीक है तो Should I present? ओके, गो क्विकली, कुछ है, एनीथिंग टू ऐड? Uh, yeah. No. Okay. Just a second. So Maruti is approved an investment of INR 102 billion to set up a 250,000 units per annum in first phase at Kharoj in Gujarat by FY29, which is driven by its capacity constraints led by sustained demand. And it is just not a full project. The big project is that the latest investment that ties with parent company. The Maruti has announced INR 350 billion to set up a second manufacturing facility in Gujarat near Gandhinagar. So the plant captures 1,750 acres land. In their 4 production units, each capacity production has 2,050,000 units, which is aligned with today's project. And coming over to another, Maruti existing production facility at Gurgaon, Mansar, and Kharkhoda in Haryana, along with Hansnapur in Gujarat. Its current capacity 2.4 million units
per annum, which is the capability to produce up to 2.6 million units annually. It's not just for car manufacturing, but also it's evolving infrastructure. So that's create directly 12,000 jobs and indirectly up to lakhs via MSME and supply. And lastly, in Jan, at, the board approved INR 50 billion proposed to acquire land from the Gujarat and expanding production capacity at crores. And to conclude that, it's signals strong long-term demand, confidence in India's EV market, and another is reinforcing Gujarat as a core export and manufacturing hub to Maruti Suzuki, aligned with export expansion, capacity, chain localization. So yeah, that's it from my answer. Okay, fine. Please be consistent, Kiran. Also, I had long injury, so that's why. Fine. Fine, guys. I think good discussion. Again, hotel industry, tourism. I will focus on tourism, auto, a bit on the EV side. Bharat is also expanding, so growth is coming in the automobile sector. So automobile workshop is very important to attend. To automobile report is very important to make. That's it. I think should be fair enough. Sir, Two sectors. sir, I was reading a report on hospitals. So I'm a little bit interested in hospitals as well. So can I start tracking that or reports and everything? Hospital is fine, Ashutosh. Allah अच्छा है. तो वो भी it is, I will say, same like hospitality industry only. Hotel का ही वो replication है. Exactly. Just on the part of the medical part. That's it. वो भी है. पर उसमें फिर क्या आएगा ना? You have to track the medical tourism. फिर कितने डिसीजेस होते हैं. जैसे अपोलो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कहाँ से डिसीज आता है, फिर उसका ग्रोथ कितना है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं इंडिया में, बाहर से कितने आ रहे हैं इंडिया में. Majorly, medical tourism in India was driven by Bangladesh people. इंडिया में Agreed. डेटा आया था कि बांग्लादेश लोग इंडिया में आते हैं. पीपल लाइक, ये बांग्लादेश इंडिया में क्यों आते हैं इतने सारे. रियलाइज दैट इट वाज फॉर मेडिकल टूरिज्म. तो वो एक था बीच में ग्रोथ फेज. अच्छा है, स्पेस अच्छा है, बट फिर अननेसेसरी यू गो इनटू द फार्मा स्पेस. Hmm. मतलब होटल छोड़ के तुम फार्मा में जाते हो. तो फिर आए, ठीक है, ट्रैक करने का पर ये होटल ही ट्रैक कर रहे हो तो क्यों दो सेक्टर तुमको अलग से ट्रैक कर रहे हो. होटल एंड ऑटो है ही ना, Okay. दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं हमको सामने सामने. होटल Hmm. में फिर तुमको जाके रिसर्च करना पड़ेगा, अरे यहाँ पे क्या अलग है, अपोलो में क्या अलग है, फिर तुम्हारे मेट्रोपोलिस में, सॉरी जो भी है, बाकी कितने होटल. आई डोंट इवन नो विच आर द सेगमेंट्स इन So Apollo's there, Max and Fortis. And फोर्टेज है. हाँ, तो और ब्रांड्स है ये. फिर इसमें लोकल भी काफी सारे हैं. फिर क्वेश्चन आएगा, व्हाट अबाउट द लोकल प्लेयर्स, उसका डेटा किधर है. hmm. Okay. ऐसा है. ऐसा और कुछ नहीं है. दो एक होटल पकड़ के रखो ना. मतलब नेवर नेवर गो अपार्ट फ्रॉम योर सेक्टर. तो मतलब ना, मैंने 8 साल से फार्मा ही देखा है. Crazy. ऐसा है. ऐसा है. तो नाउ यू आई बाकी भी देखे, ऐसा नहीं कि बाकी सेक्टर नहीं देखे, बट इट वाज नेवर माय गो थ्रू स्टॉक. तो मैं तुमको कभी बाकी के बारे में बात नहीं करूंगा. हाँ, कुछ ने पूछा तो पता है. होटल होटल के बारे में हाँ पता है. आईटी के बारे में पता है क्या चल रहा है. हाँ. बट जब फार्मा आता है तो आई विल टॉक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और जो मुझे पता है आई विल नॉट गो बियॉन्ड दैट. मतलब मैंने जैसे फोकस किया था इंडिया पे, तो Hmm. फार्मा में भी आई फोकस ऑन स्पेसिफिकली जिसका इंडियन फोकस है, इंडिया फोकस है. जैसे अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ होटल में कैसे ऐसे करो जो सिटी फोकस्ड है, तुमको पता है क्या चल रहा है उसके बारे में. बिकॉज आज तो मुझे विनतिप के बारे में पूछोगे, सैमी के बारे में पूछोगे, तो आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट वो कौन से रोड पे है, उसका कितना होटल है, कितने रूम्स है, कितना ऑक्यूपेंसी होता है, उसके आजू बाजू में क्या है. अभी इसके आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे. ऐसा है. फिर आएंगे फाइनेंशियल क्वेश्चन. वो तो बेसिक है, वो तो सबको आने चाहिए. तो ये होता है. तो जितना इतना जब तुम किसी स्टॉक के बारे में बात करते हो, ऑलवेज ये हमेशा तुम्हारे आजू बाजू क्या चल रहा है ना, वो एट दिस लेवल तुम थोड़े एक्सपीरियंस होने के बाद ठीक है, तुमको तो ट्रैक करना ही है. और ना हम लोग जाने के एक्चुअली, मतलब मैं आई गॉट अ चांस टू विजिट हैदराबाद फॉर लुकिंग एट द फार्मा कंपनी. तो फार्मा कंपनी जाके तब मुझे समझा कि अरे यार हैदराबाद में फार्मा कंपनी इतना क्यों चलते हैं, कि हैदराबाद की फार्मा कंपनी करते क्या है. वो सब बाद में समझता है टाइम के बाद. और जब अभी तुम ग्राउंड लेवल हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आजू बाजू देख ही सकते हो ना क्या चल रहा हाँ. Auto है. FMCG. ऑटो एफएमजी होटल्स भी अगर तुम जाके देख के आते हो, तो इसके लिए मैं पुणे में हूँ, Hmm. इसके लिए मैं 29 की बात कर रहा हूँ. आई विल एग्री विद दिस.
मैं पुणे में इसके लिए विनती और फैमिली की बात कर रहा हूँ। ऐसे मुंबई में तो मैं नहीं करता उसकी बातें, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है पुणे में। हाँ। ओके ओके सर। ओके ओके गाइस, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू, यू। सर सर बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छा, सॉरी। हाँ सर, एक डाउट था सर, मतलब सर हाँ होटल सेक्टर का कोई वैल्यूएशन पे लेक्चर है सर, मतलब कोई बैच का रिकॉर्डिंग? वैल्यूएशन पे तो नहीं किया हमने, हमने सिर्फ होटल ही ट्रैक कर रहा है अभी तक, वैल्यूएशन नहीं ओके हुआ है। ओके सर, ईवी वही बाय पूछना इबिटडा ही था। है, ईवी बाय इबिटडा ही है होटल का वैल्यूएशन, नथिंग एल्स। उसमें डीसीएफ नहीं चलता है, पी नहीं चलता है। ओके ओके। हाँ, और ईवी तो बाय सर सेल्स। ये, हाँ सर इस पे डाउट था सर, पूछ सकता हूँ इफ यू कैन? हाँ पूछ रहा हूँ, हाँ बता। सर ईवी एबिटा जो भी मैट्रिक मैंने देख रहा था सर आईसीज में भी, तो वो लोग सर ऑन एन एवरेज 20 से 22 का मल्टीपल लेते हैं सर, तो सर वो नंबर पे कैसे वो लोग डिराइव आते हैं, तो वो पूछना था सर, मतलब 22 EQ और 20, मतलब 20 EQ और 22 EQ। तो यूजुअली क्या होता है, ग्रोथ रेट पे लेते हैं पैड, इबिटडा ग्रोथ। इबिटडा ग्रोथ इज एट 15%, 15-20%, तो 20 के टाइम्स ऐसा होता है यूजुअली। ओके ओके, अच्छा, या फिर अभी तुम ब्रांड हो गए, टाटा इज अ ब्रांड, ताज इज अ ब्रांड, एआईट इज अ ब्रांड, जो लग्जरी है, उसके मार्जिन ज्यादा है, सो यू गेट मोर देन 20 to 25 में होता है ऐसा, मतलब एक से ज्यादा। ना देर इज नो एग्जैक्ट वे कि 20 क्यों 22 है, इसको प्रूव करने का किसी के पास भी कोई मेट्रिक नहीं है। राइट सर। तो क्या करते हैं हम हिस्टोरिकली देखते हैं, हिस्टोरिकली इसको इतना मिल रहा था, और फ्यूचर में हम क्या अज्यूम करते हैं, हमने 20 क्यों लिया है, अज्यूमिंग कि इसका हिस्ट्री और फ्यूचर सेम रहेगा। अगर ये ओके। अज्यूम करते हैं तो ही 20 वह तो रीडेटिंग है, 20 का 25 भी होगा या 20 का 10 भी होगा। तो वैल्यूएशन पे ओके ज्यादा ओके। बात नहीं करना इज बेटर, हिस्टोरिकली पकड़ के रह कि सर हिस्टोरिकली है, अज्यूमिंग कि हिस्टोरिकली इतना ही ग्रो होगा। अगर तुमको बोल रहे हो इससे ज्यादा होगा तो बोलो सर 20 मिल रहा था, शायद से 25 मिलना चाहिए, बट सर इट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई डोंट लाइक टू, हमें इंटरव्यू सर, आई वुड लाइक टू टॉक मच ऑन इट, आई एम नॉट इन अ राइट पोजीशन टू टॉक मच ऑन इट। क्योंकि तुम ओके अगर बोलोगे ना तो वापस वो सामने से कुछ तो रिटेलिएट करेगा ही तुमको, कुछ भी बोले तुम। ये राइट सर, मेरी वही बात कर रहा हूँ। कंफ्यूजन था सर। यस हाँ सर। हाँ, तुम मुझे भी बोलोगे ना, मैं भी तुमको कुछ ना कुछ तो नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलूंगा ही। तो सीधा बोल देना करेक्ट क्या सर। कि सर अज्यूमिंग 20 पहले चल रहा था, अभी भी अज्यूम करता कि 20 चलेगा। आई डोंट नो मच अबाउट वैल्यूएशन, बिकॉज आई एम नॉट इन अ राइट पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज मैंने इतना इतना मेरे पास, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू टॉक ऑन इट। बेसिक ओके पता है, हिस्ट्री ऐसा था, फ्यूचर में इतना है, तो आई कैन यूज अ बॉल पार्क और सर कॉमन सेंस दैट पहले 20 मिल रहा था, उसका ग्रोथ रेट 10% था तो उसको 20 मिल रहा था, अभी ग्रोथ पर्सन अगर 20% है तो उसको 40 मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। आई विल यूज माई कॉमन सेंस इन दिस। क्योंकि अंडरस्टूड। क्योंकि सामने वाले को भी पता है, वो एनालिस्ट लोग को भी नहीं आता है वैल्यू ऐसा नहीं हो। बट तुम कुछ बोलोगे ना कि सर इसके पैसे ऐसा आया, देन ही विल आस्क यू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। राइट सर। और सर एक क्वेश्चन था सर, और सर मैं जब भी मैं आईसी देख रहा था ना सर, तो उसमें होटल्स के रिलेटेड सिर्फ वो लोग ने 3 साल का ही सर फोरकास्ट किया था, पर सर यूजुअली हम 5 साल का फोरकास्ट करते हैं ना सर, नहीं तो नहीं, एक ही सिक्लिकल साल का, इंडस्ट्री इसलिए सर। ओके एक ही साल का, 1-2 साल मैक्स रिपोर्ट्स में। ओके ओके। ठीक तीन है सर। साल का भी ओके। उसने किया होगा बिकॉज ऑफ अभी खत्म हो गया ना, क्योंकि साल खत्म हाँ हो गया, FY 26, हाँ 3 क्वार्टर हो गए खत्म सर। हो गया। इसके लिए उसने 28 का नंबर लिया होगा, वरना 27 इज द मैक्स। ओके ओके। ओके सर। थैंक यू। सर वो वही है ना जो फाइनेंशियल मॉडल में अपन फोरकास्ट करते हैं, लेकिन 5 साल का करते हैं, लेकिन वही डेटा 3 साल तक वहाँ रिपोर्ट में ऐड साल का करना होता है रिपोर्ट ना। में, हाँ। तो हम वो फ्यूज बोला ना उस दिन, फॉरवर्ड पी जो मैं बता रहा था क्लास में, फॉरवर्ड पीस फॉर 1 ईयर हाँ ना, हाँ। 27। तो अगर कभी कभी ऐसा जो कोविड था, कोविड में क्या हुआ था कि पूरा साल ही बर्बाद हो, तो उसका तुम पी ले ही नहीं सकते बेटा, तुमको 2 साल बाद का ही लेना है, तभी फिर 2 इयर्स फॉरवर्ड लेते हैं। ओके। ऐसा। Sir, ओके, या sir, actually, I sent you the ICL company profile. ओके, Sir, can you please check it once? Actually, sir, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, so I lost all the datas I have. So this is अरे the third time I'm doing it. अरे And इतना क्यों, बाप रे, भाई सॉरी अंके, ऐसा मत करना, करके रखना, दिस इज लाइक डबल डबल काम हो गया ना वरना ये। हाँ सर, सर ट्रिपल काम हो गया, मतलब लाइक ICL का आई हैव मेड 3 रिपोर्ट्स, मतलब इसको लेके, सो तुमने मुझे सेंड टाइम किए भी होंगे ना? यस सर। ओके, नहीं नहीं, मतलब इसके लिए वो गूगल ड्राइव पे आप सेव करके रख देना जब भी बनाते हो। सर एक्चुअली वर्ड में किए थे, लैपटॉप पूरा मेरा उड़ गया, तो सारा डेटा सब कुछ उड़ गया था, तो
अच्छा इसीलिए। बना, मतलब प्रेजेंटेशन इज गुड अंकिता। ओके। मतलब जो किया है, आई थिंक देयर इज हम्म। नथिंग टू टॉक ऑन इट। बस या। प्रेजेंटेशन करना है और मॉडल्स बनाओ अंकिता, अभी मॉडल्स बनाना चालू करो। हाँ सर, क्योंकि मॉडल्स भी मेरे पास रेडी है, क्योंकि डेटा उड़ गया था। सो आई वाज ट्रैकिंग लास्ट 10 years डेटा ऑफ द लाइक बैलेंस शीट, पीएनएल, वो सब कुछ बना के रेडी हो गया सब कुछ, बट सब कुछ इरेज हो गया था। सो आई हैव टू डू इट अगेन। सो आई बी जस्ट डूइंग इट, आई एम वर्किंग ऑन इट अगेन। सो इसके बाद फिर सर वो ये बना देंगे क्वार्टरली रिपोर्ट्स, वो सब कुछ आपको भेज देंगे बना के। हाँ करना जल्दी, क्विकली, बिकॉज यू हैव टू प्रूव नाउ 3 months क्या किया तुमने। ठीक है, यस सर। क्या होगा, इंटरव्यूज मिलने को इजी हो जाएगा। कोलकाता में ओपनिंग्स आते हैं एंड दे प्रेफर बीकॉम कैंडिडेट्स, ऐसा ओके है। ओके। हाँ। हम्म। ओके सर। तो तुम्हारे तो वो लोग प्रीफर करेंगे तो क्या, रिपोर्ट्स पे, तुम्हारे मॉडल्स पे मॉडल्स आता है क्या, तुम बात क्या, और एक की बात कैसे करोगे तुम, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ हम्म। डू यू प्रेजेंट थिंग्स। ओके। तो ओके, सर ये अभी प्रेजेंट कर दे क्या मैम को शाम हाँ में? मैम को करो ना प्रेजेंट, यस यस करो मैम को। ओके ओके एंड सर। देन सुबह मुझे भी बोलना कि सर मुझे भी प्रेजेंट करना है, तो सुबह मेरे सामने भी करता है एक बार। ओके ओके सर। ठीक है। श्योर। ओके ओके सर। ओके। थैंक यू। या।